शी इज अ सोशल वर्कर ना। मैडम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं अपन, फिर स्टार्ट करेंगे। हाँ, थोड़ा देर वो करके फिर या अब भी का तो मैडम यूट्यूब पे ज्वाइन होने दीजिए, क्योंकि कल बहुत लोग ज्वाइन नहीं हो पाए थे। मैडम ये 1 मिनट मैं वो देख लूं क्या स्लाइड। ठीक है मैम। हाँ, देख लीजिए सर। नहीं एक बार शेयर कीजिए ना। हाँ, देख लीजिए सर। रमी मैम, मैंने कुछ बोला तो वहां पर आप सुन क्या करना। हाइकर सर ना लेगा। थॉमस मैडम, अभी बोरकर मैडम कैसे हैं? बीच में अच्छे हैं। अभी हमारा एक रिटायर्ड टीचर्स का ग्रुप है, उसमें कभी कभी आता है तो हम मुलाकात होते रहता है। हाँ, अच्छा है मैडम, ठीक है। अच्छा मैडम मेरा नमस्ते जरूर बोलिएगा। बिल्कुल बोल देंगे जरूर। हाँ बोल। दिख रही है सर? ठीक है मैडम। हाँ जी सर, दिख रही है सर। उसका हेलो, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग मैडम, फाइन, वेरी फाइन। कैसे हैं आप? बढ़िया है मैडम, बढ़िया। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। आपका टॉपिक भी मशरूम कल्टीवेशन का बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, हर बार में कहना है कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव हमको रहता है। और में सर ये के बॉन्ड भी है। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। सर आप मुझे सुन रहे हैं? वो हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। डॉक्टर दीक्षित कहाँ है अभी? डॉक्टर दीक्षित कहाँ है? डॉक्टर दीक्षित फ्रॉम जयपुर सर। हेलो। हाँ, कहाँ है डॉक्टर दीक्षित आजकल? हेलो सर आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ। डॉक्टर दीक्षित, आप डॉक्टर रेखा तिवारी बोल रही हैं ना? गर्ल्स कॉलेज से हूँ, एसएस गर्ल्स कॉलेज गोंदिया से। अच्छा, सॉरी। नहीं होगी सर, मैं डॉक्टर रेखा लीला। ओह, आई एम सॉरी मैडम। यू आर को कन्वीनर ना? ओके। हाँ, नो इश्यूज। आई एम सॉरी मैडम। ओके डॉक्टर ग्वालियर। सर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उन लोग कर रहे हैं। डॉक्टर ठाकुर,
मैं भी जबलपुर से हूँ। अच्छा 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 अच्छा। I did my entire education from Jabalpur only. Yes. अच्छा 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 अच्छा। ये Yes. कौन? और मैं हूँ से साले से। अच्छा 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 अच्छा। PhD में नागपुर से हुआ है। आफ्टर मैरिज। चलिए वेरी गुड मैम। इसे कल मैं सोच रही क्या करूँ स्क्रीन पर, बट ओके। मी रात्री पण बोलली त्याला, आता सकाळी पण बोलली त्याला, रात्री पण सांगितलं. त्यांना पाठवून देते मी. तेजूला पाठव, तुम्ही पाठवली सर तेजूला? मैडम थॉमस, मैडम थॉमस, हेलो मैडम थॉमस, am I audible to you? Yes sir. When did you retire, madam? In 2018 sir. 2018. 18, So you were in you were at Nagpur. I'm basically from Kerala. I got I see. to Nagpur. There तब से Nagpur है. अच्छा 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 अच्छा। So you served earlier in SS Girls Degree College, Gondia also, no? No. No sir. I've not been as a lecturer. No. I'm in LAD College. I was in LAD College from the beginning. LAD College, Nagpur. Nagpur, yes. Oh, I see. Do you know about this one society is there, the multi-purpose society in Nagpur? Have you heard about it? No, kite के लिए है sir. कौन सा multi-purpose? ये Department of Botany peoples are managing that society. Okay. It's a very big society. The participation is from several colleges. And in fact, they organized one international conference at Singapore in 2017. So I happened to be there. Okay, sir. So it's a good society of Nagpur. I think they are publishing the journal also. So I'm not very much deeply associated with the society, but in that particular year, I was asked to present my paper on mushroom in Singapore. So that is why, and we had a big trip also. We have a trip to Thailand, then Malaysia, then Singapore. It was a 10 days visit. 10 days tour with persons from chemistry department, then from botany department, geology department. Some people from agriculture college Nagpur were also there. Yes. That was good. So you now settled at Gondia itself? No, I'm in Nagpur, sir. Oh, sorry.
I'm So settled in Nagpur. Oh, I see. Yeah. So now no connection with Kerala. Not much. Once in a while, every year we go to meet our Which place you belong to in Kerala? Which place you belong to? Tiruvalla. It's Tiruvalla. have you heard of Kottayam, Cochin? Cochin, very well. I had visited Cochin. Cochin, then Trichy. Trichy, we had one Kerala Agriculture University. You may be knowing about Kerala Agriculture University. Yes. So I visited Kerala Agriculture University. कि मेरा ऑडियो बंद है करके ऐसा बोलूं? Class from there. हाँ. मैडम आवाज ही नहीं आ रहा. नशीले आ रहा है. नहीं डॉक्टर नतीन नीता विचारून घे स्टार्ट करायचं का? पण इथे सर आपण स्क्रीनवर दिसत नाही तर कसं त्यांना हे करायचं काही नाही. Are we waiting for participants to join? समझ. ओके सर. Yes, a very good morning to everyone. समस्त गुरुजनों को प्रणाम. याति सर्वभूतेश संस्थित नमस्ते एजुकेशन दिया गोंदिया ऑफ होम्स एंड एजुकेशन तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन केरला पाल नारायणपुर छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित आज सेकेंड डे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. इनॉग्रल स्पीच डॉक्टर एन.के. भायकर सर. इंट्रोडक्शन स्पीच ऑनरेबल डॉक्टर वाजपेयी. इंट्रोडक्शन स्पीच डॉक्टर प्रोफेसर थॉमस मैडम. टॉपिक फ्यूचरिस्टिक रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऑनरेबल डॉक्टर रत्ना नशीने के द्वारा एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू रूरल एंटरप्रेन्योरशिप. इन विषयों पर, इन टाइटल्स पर हम लोगों ने चर्चा की. रियली कल की चर्चा बहुत फ्रूटफुल रही. इसीलिए आप सभी आज हम सेकेंड डे हमारे जो स्पीकर है डॉक्टर ऑनरेबल डॉक्टर MP ठाकुर. It is my proud privilege to introduce Dr. MP Thakur. At present, he is working as a director control examinations, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalay, Raipur. आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट व डॉक्टरेट की डिग्री जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से प्राप्त है. डॉक्टर MP ठाकुर फाउंडिंग डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर्स के रूप में कावराबांध राजनांदगांव में आपने अपनी सेवाएं दी है. आप इंडियन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी नेशनल प्रेसिडेंट के लिए निर्वाचित. 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ICRI न्यू दिल्ली को सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज किया. ऑनरेबल डॉक्टर MP ठाकुर आपने एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चर साइंस शंघाई चाइना ICRI SAT पाटनचेरू आंध्र प्रदेश में विजिट किया. आप एज ए मेंबर RAS of ICAR डायरेक्टर ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन हिमाचल प्रदेश. इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी रायपुर में एज ए मेंबर के रूप में कार्यरत है. आपको कई महत्वपूर्ण अवार्ड से सम्मानित किया गया है. ब्रिज गोपाल शर्मा ऑल इंडिया बेस्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर अवार्ड 2016, ऑल इंडिया अबव एंड बियॉन्ड अवार्ड 2018,
Professor Verma Memorial Lecture Award 2018, Lifetime Achievement Award, K.C. Mehta and मनोरंजन मित्र अवार्ड 2019 के द्वारा व अन्य कई पुरस्कारों के द्वारा आपको नवाजा गया है। आपने लगभग 8 बुक पब्लिश किए हैं, 122 रिसर्च पेपर पब्लिश हैं, आपको लगभग 15 सेमिनार कॉन्फ्रेंस में एज ए कीनोट स्पीकर गेस्ट लेक्चर के लिए आपको इनवाइट किया गया था। डॉक्टर एन.पी. ठाकुर लगभग 38 तथा पीएचडी के स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन दिया है। अ वंडरफुल एंड रिमार्केबल इफेक्टिव बायोडाटा ऑफ डॉक्टर एन.पी. ठाकुर। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट थ्रू मशरूम कल्टीवेशन पर अपने हम सब का मार्गदर्शन करें। Now I request you Dr. M.P. Thakur to deliver of women entrepreneurship through mushroom cultivation. Dr. M.P. Thakur. Thank you, Madam Rekha. Good morning to all of you. First of all, let me extend my gratitude to the principal, Gondia Education Society and Girls Degree College, SS Girls Degree College, Gondia, and Kars Narayanpur, Dr. Madam Ratna Nachine, who have given me the opportunity to share the topic which has been given to me. So good morning again to all of you. And I would also acknowledge my gratitude to the principal, Dr. N.K. Bhaikar-ji, then former head of the department, Dr. Gigi Thomas, to whom you have heard yesterday, Dr. N.D. Khandekar, co-convener of SS Girls Degree College, Dr. Rekha Tiwari, Dr. Rekha Lihare, and all the faculty members, and maybe perhaps the student might be joining. So I welcome you all. Thank you very much. Friends, I have been given the topic to speak on, and the topic is women entrepreneurship development through mushroom cultivation. Now, if you ask me about the entrepreneurship in women or skill development in women, I tell you, mushroom has been very close to me. Am I audible to all of you? Am I audible to all? So, mushroom has been very close to my heart. And as far as the entrepreneurship, women entrepreneurship is concerned, I tell you, I have imparted training program on mushroom cultivation to more than 10,000 women and 10,000 entrepreneurs. And perhaps out of those 10,000 entrepreneurs, about 7,500 may be women. Why? Because I do believe that if you train a woman, you are going to train the entire family. But if you train a male, you are going to train only a male. So keeping this in mind, I try to impart training program on different aspects of mushroom, whether it is mushroom smart production technology, or it is mushroom crop production technology, or it is mushroom processing technology, or it is mushroom marketing technology. Yesterday, a very good talk was delivered by Dr. Gigi Thomas, who has been the former head of the department, and she belongs to Department of Extension Education. She rightly said yesterday that the kind of emphasis which should have been given to extension is not given. It is not given. The importance which is given to education, the importance which is given to research, the equal importance has not been given to extension. Madam, I wanted to tell you, now it has been very well recognized by the central government. And I tell you, as far as agricultural extension is concerned, I have been the director of extension education in my university about for 4 years. And during my regime, we received 3 national and 7 state awards, these 7 total zonal awards during my regime as director extension. And now I think this extension education has been widely realized. And I tell you, in agriculture extension,
the central government has given the Krishi Vigyan Kendra. You might have heard about it. These are the knowledge centers in the country. There are more than 700 knowledge centers, which we call it as Krishi Vigyan Kendras. Do you know, it is the largest network in the world to impart agricultural education and to transfer agricultural technology, agricultural, horticultural, and allied technology to the farmers, to the beneficiaries, to the input dealers, and to everyone who is related to agriculture. So, madam, I think you will be happy to hear me that agriculture extension has also been given due emphasis, which was not given earlier. You have rightly said yesterday. Madam Ratna Nasine, she is a role model for many women. You heard her also. She has she has spoken a lot about the women entrepreneurship development, and she has done a lot of work. She is still doing, and I congratulate her that she got the Dr. APJ Abdul Kalam National Award 2020 only this year for her significant contribution in the field of women entrepreneurship development. So I congratulate her also. Now coming to the topic, I will speak on. This is the structure of my presentation. The first, I am going to speak on the status of malnutrition in women and children especially. Then the mushroom as the entrepreneurship skill for women, mushroom as food, nutrition, medicine, mushroom consumption, particularly in India versus China, and mushroom production in India, mushroom spawn production, crop production, processing, value addition, and mushroom utilization. Now coming to the mushroom status, if you look at, this is, I am talking about in general, what is the nutritional status of Indian citizens. I think you're all from home science, you may be knowing very well about the nutritional status, and we must know about nutritional status. How important nutritional status in human body is, I am going to talk about. As per the Global Nutrition Report, you can see here, 1/3 of the world's undernourished children, they are in India. This is not a happy situation. Madam Gigi Thomas, are you happy with this situation? I think nobody would see that these are the happy situation. Now imagine 1/4 of the world's hungry children, 20.8% of the children which are physically underdeveloped, they are in India. 10 lakhs children of less than 5 years of age, they die every year due to undernourishment. These are not the happy situation. India has 34.7% of the undernourished people, and World Health Organization says that 70% women, 50% pregnant women in India, they are anemic, they are suffering from iron deficiency. 35.6% women, they suffer from the chronic energy deficiency diseases, which is indicated by the body mass index, which is below 18.5, and ensuring food and nutritional security in our country is really a big challenge. Now coming to the initiatives which has been taken up by the government of India. Now we are very fortunate to have our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, who has launched a mega scheme that is called National Nutrition Mission. Now this National Nutrition Mission was launched in the year 2017-18, and it has a budget provision of 9,046 crore, and this is a 3-year scheme. And the INM is a comprehensive approach towards the raising nutrition level in the country on a war footing level. You will come to know that our country is the most nourishment deficient country in the world. Asia is very poor in the nutritional status if you compare it from other continents of the world. And there are states in India like Chhattisgarh, Bihar, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha. These are the states where the nutritional status is extremely, extremely poor. And what we have to do is, we have to enhance the nutritional status, and the government of India has taken a very good initiative, and the goal of NNM is to achieve improvement in nutritional status of children, especially who are below the age of 0 to 6 years, then adolescent girl who want to become the mother. I think pregnant women, lactating mothers, these are the groups to whom if nutritional status in this group is poor, I tell you the future generation
is going to be poor. It is not going to be it is going to be underdeveloped. The brain will not develop properly, and we have to suffer a lot. Now, more than 10 crore people, they will be benefited by this NNM program. All the states of India, all the districts, in a first phase, 315 districts in 2017 it was covered, followed by 235 districts in the year 2018-19, and remaining districts are going to be covered in the current year, that is 2019-20. So this is a mega scheme started by the Honorable Prime Minister, keeping in view of the undernourishment prevailing in our country. पोषण, पोषण का मतलब क्या हुआ? पोषण का मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी, पोषण का मतलब विटामिन की कमी, पोषण का मतलब प्रोटीन की कमी, फैट की कमी, मिनरल्स की कमी, और सारे न्यूट्रिएंट्स की जब कमी हो तो हम कहते हैं कि न्यूट्रिशनल स्टेटस इज वेरी पुअर. नाउ you have just seen the nutritional status of the women prevalent in the country. Now, madam, for the information of the audience, I will just tell that due to the implementation of this mega program, that is NNM, after the implementation of this program, I tell you the purpose of this program is to address the deficiency of undernourishment and malnourishment. And madam, see, गरियाबंद में पोषण अभियान, आई टेल यू, ये पोषण अभियान जो है पूरी कंट्री में पोषण अभियान चल रहा है, पूरी कंट्री में ये पोषण अभियान चल रहा है. सारे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के माध्यम से ये सारे प्रोग्राम जो है कंटिन्यूअसली चल रहे हैं. बावजूद इसके यदि आप देखें तो छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर 38 से बढ़कर 41 हो गई है. इसी माह का डाटा है, और ये आज का डाटा है कि वनांचल के 67,000 से अधिक बच्चे हुए कुपोषण से मुक्त, और साल भर में 14% की कमी आई. अब एक ये डाटा है जो आज का है, और ये डाटा है जो इसी माह का है, जो बोलता है कि बच्चों में कुपोषण बढ़ेगा 14%. मोदी जी की 9,000 करोड़ की स्कीम पूरे देश में चल रही है न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए, और यहाँ छत्तीसगढ़ में आ रहा है कि मृत्यु दर 38% से बढ़कर 41% हो गई, और बच्चों में कुपोषण जो है वो 14% बढ़ेगा. अब ये डाटा सही है कि ये डाटा सही है? मुझे लगता है गिगी थॉमस मैडम बताएंगी, कि रेखा तिवारी बताएंगी, कि एंडी खांडेकर बताएंगी, कि डॉक्टर एन.के. बहेकर बताएंगे, जो प्रिंसिपल कन्वीनर गर्ल्स डिग्री कॉलेज के हैं. तो कौन न्यूट्रिशन वाला बताएगा कि ये क्या सच है? आई डोंट नो. दिस आई लीव अपॉन यू ऑल. We have to decide कि सच क्या है. यदि आप न्यूट्रिएंट्स का असर देखें तो ये क्या असर डालता है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं. सबसे पहला असर जो चाइना ने कोविड-19 को पूरे वर्ल्ड में फैला रखा है, और आज जो कोविड-19 पैंडेमिक से हम लोग सफर कर रहे हैं, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण हमारा जो इम्यूनिटी है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है. और ये जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी जो है माल नरिशमेंट से कम हो जाती है. जो वुंड हीलिंग है वो कम हो जाती है, मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और जो हायर कॉम्प्लिकेशन मोर्टेलिटी बढ़ जाती है. लॉन्गर हॉस्पिटल स्टेज, आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और आपका जो लाइक्लीहुड ऑफ एडमिशन है, रीएडमिशन है, यू विल अप्रोच द डॉक्टर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम माल नरिशमेंट. एंड मैडम, सी द चिल्ड्रन who are undernourished and who are malnourished. Now the children in city area, in urban areas, their mothers are feeding them and they are very healthy, they are malnourished. And the children who are in the remote areas, they are suffering from undernourishment. So both these situations are prevailing in our country. Now coming to mushroom, how mushroom can address all these issues, I will just tell you that what mushroom is. मशरूम एक फंगस है जिसको आसानी से आंख से देखा जा सकता है और आसानी से तोड़ा जा सकता है. ये इसका डायग्राम है, ये इसके स्पोर्स हैं जो फैलते हैं, और ये वो आदमी है जिसका नाम है चांग, एसटी चांग. एसटी चांग ने 180 से ज्यादा देशों का भ्रमण किया है. फादर ऑफ मशरूमोलॉजी के नाम से इनको जाना जाता है. आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू इंटरेक्ट विथ हिम फॉर 5 days in China in one of the second international crop
conference which was held in China for 50 days, and I happened to be the fortunate person to deeply interact with Dr. S.T. Chang, who is the father of mushroom science. And this institute, Edible Fungi Institute, is the only international institute in the world working on the edible fungi. Now, if you ask me why should we grow mushroom, then the first very important reason is that as a result of agricultural activity, India is generating about 600 million tons of agro waste every year. And this agro waste is highly rich in highly complicated compound, that is cellulose, hemicellulose, and lignin. If mushroom is blessed with the God by the superpower to convert these three things, to convert agro waste, which is rich in cellulose, hemicellulose, lignin, into a highly nutritious food, which is rich in protein, which is rich in minerals, rich in vitamin D, vitamin C, all the vitamins, whether you talk of niacin, you talk of riboflavin, you talk of ascorbic acid, you talk of vitamin D1, you talk of vitamin D2, you talk of sodium, potassium, iron, calcium, whatnot. Zinc deficiency. In COVID-19, zinc deficiency is, it is observed. Even this oyster mushroom or many other mushroom they are very rich in many kinds of minerals. Now, coming to, as a layman, people generally commit mistake in identification of the edible and edible and poisonous mushroom. For the information of all the participants, this is a mushroom which we call it as edible mushroom, and this is a mushroom which we call it as poisonous mushroom. Madam Gigi Thomas, can you identify and tell me which one is poisonous and why it is poisonous? It is very difficult to say because the differences are very, very narrow. So for the general people, not to confuse with edible and poisonous mushroom, please remember, the poisonous mushroom is having 4 parts. This one is, which is like umbrella, this is called pileus. This is a stalk. This stem-like portion is called stalk. And this portion, which is directly attached to the substrate, is called volva. And the 4th one, which is very, very important, which is like my collar, this portion is called annuals. So, Madam Gigi, any mushroom having these 4 parts, 99% of them may be poisonous. So one should not go for consumption of these mushrooms. Even one should not advocate, and hardly, I tell you, only 1% mushroom they are poisonous. But I tell you, it is very, very difficult to identify the difference between edible and poisonous mushroom. Now you may raise a question, sir, in remote areas of India or in tribal areas, how do people identify between the edible and poisonous mushroom? Madam, there are mushrooms which are distinctly different, but even in those mushrooms, you may commit a mistake. I tell you, one of the doctor who is from American Type Culture Collection in USA, he happened to teach me during my second international workshop at Chennai, at China, and he was telling me that there was a family of a physician, and the doctor was he has a hobby to go to the forest area and collect the mushroom and cook the mushroom, and he was a fan of mushroom. Now, as he was practicing, one day also he went to the forest area, bring the mushroom, cook the mushroom, and madam, I tell you, his entire family, they died after the consumption of poisonous mushrooms. So you can imagine a person, a physician who is a biologist, committed a mistake in identifying the edible and poisonous mushroom, and he lost his entire family. So what I mean to say is that unless the mushroom in market is properly labeled, I would not advocate you to purchase it and to go for its consumption. Now, why to grow mushroom? The first one is that we have plenty of crop waste available. We have plenty of labor available. Landless venture. It is a landless venture. It is environmental pollution free. Wealth from waste. I told you that 620 million tons of agro waste can be converted into today highly nutritious foods, which we call it as mushroom. So waste can be converted into wealth. It is the technology
It is a technology which we call it as mushroom technology. If you are in USA, if you are in Germany, if you are in Washington, if you are in Netherlands, I tell you, you will be highly respected because you know the technology of mushroom growing. You are a multi-millionaire person because you know about mushroom growing. But in India, people hardly realize, and mushroom is considered a health food. It is a way to employment generation, and SMS, the spent mushroom compost can be used to enrich the soil, and in organic farming, this can be used. Now, madam, there are three global issues. One is the inadequate quality of food supply, diminishing quality of health, increasing environmental deterioration. And I think that in all the global issues, if you look at, mushroom has the solution for all the problem. One, high quality of food it has a lot of medicinal value, nutraceuticals it has, and it has the enormous capability the bioconversion capability of bioremediation. Lot of heavy metals are there, lot of pollutants from the industry, they get released into the soil, into the water, into the air, and mushroom has the capacity to degrade all those heavy metals which are present in the soil or in the soil or wherever it is. It has the capacity. Advantages of mushroom growing as entrepreneurship by women. Here you can say untapped potential. Madam, I tell you, mushroom is efficient means of converting agricultural waste into the valuable protein, presenting a huge potential of generating additional income and employment. So what I would say that it has enormous possibility. मैडम यदि ये पूछे मेरे से कि मशरूम की महत्ता क्या है, तो केवल एक ही स्लाइड में बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री यूएसए, और यूएसए का मुखिया जब हिंदुस्तान आता है तो हिंदुस्तान को प्रेसिडेंट इंडिया के द्वारा जो सब्जी ऑफर की जाती है वो एक मशरूम की सब्जी होती है जिसका नाम है गुच्छी मशरूम। आपको याद होगा फरवरी के माह में जब प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप आए हुए थे तो इनका स्वागत किया गया था, डिनर होस्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और डिनर में गुच्छी मशरूम की सब्जी बनी हुई थी। डू यू नो हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ गुच्छी मशरूम मैडम गिगी? No other vegetable is so much expensive. Its cost is 25,000 to 30,000 rupees a kg. It is a naturally growing mushroom. It is grown only in temperate area like Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand. These are the area which are highly temperate, where the temperature is very low. Only there the guchi mushroom is grown, and guchi mushroom is exported from India. It is very expensive. दिल्ली में जिस किसी के यहाँ गुच्छी मशरूम की सब्जी बन जाए तो उस व्यक्ति को, उस फैमिली को उसकी शोहरत से नवाजा जाता है। ये मतलब है गुच्छी मशरूम का। यदि आप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल इन वुमेन की बात करें तो मैं समझता हूं कि मशरूम टेक्नोलॉजी कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट इन डबलिंग और ट्रिपलिंग द फार्मर्स इनकम और वुमेन इनकम। एंड हाउ इंपॉर्टेंट वुमेन इनकम इज, यू आर ऑल होम मिनिस्टर्स, all the women in country, they're all home ministers. They are managing the kitchen, they are managing the soul of the family. They must be enriched, they must be powerful, they must be economically strong. I do believe. And if a woman is economically strong, she will be respected by her husband, in her family. And I think if you go for practicing mushroom span in your family, if you go for padista mushroom cultivation, if you go for oyster mushroom cultivation, if you go for milky mushroom cultivation, if you go for shiitake mushroom cultivation, if you go for button mushroom cultivation, I see and I'm 100% sure that your income is going to be doubled. In how many days, madam, do you know? If you are going for span production, your income will be doubled only within a week period. If you are going for padista mushroom cultivation, go to Odisha. There the woman is doubling the income only within 20 to 21 days period. If you want to double the income in 45 days, and Pitakur has the solution to double the income, go for cultivation of oyster mushroom. You can double the income within 45 days. 50 days, go for milky mushroom cultivation, and shiitake mushroom 45 days, and button mushroom if you want to practice, you require 30 days, 90 days for mushroom cultivation. Now, madam, here you can see, this is one of the NGO which is called Pradhan.
Am I audible to all of you? Yes. Am I audible, sir? Yes, sir. Madam, This yes, is sir, a yes, sir. yellow You are card. audible. This is a yellow card. This is a yellow card like ration card what we have, which is issued by the district government. See here, this yellow card is very well maintained by the Pradhan Group at Suktaba, Hosangabad, where they maintain all the records of the inputs they have given to the family. And here you see it is only 1,392 rupees which was given. It is the input for cultivation of oyster mushroom. And madam, you can see here the total cost of dried mushroom was 5,685 rupees. Now just minus this amount to this amount, it comes to 4,293 rupees. You can double or triple the farmer's income. You can double the woman income. And more than 250 women in Suktaba of Hosangabad district, they are practicing oyster mushroom cultivation for the last 35 years. And I am the technical advisor to this Pradhan group, and I am frequently visiting. Now, women entrepreneurship via mushroom production technology. Another very important point is if you are practicing agriculture, if you are practicing agriculture in an area of 1 acre, you offer job hardly to 1 or 2%. But if you are practicing mushroom cultivation in an acre of area, you are offering job to 20 to 22%. This is the strength of mushroom. This is the strength of mushroom. There are many women in the country who are offering job to other people. They are not job seeker, but they are job provider. So if you practice mushroom cultivation, you will become the job provider. You will not be the job seeker. See here, this is how oyster mushroom dehydration is done. This is how powdering is done. This is how capsuling is done. And see this rural women, how they are marketing the fresh mushroom. See here, this is one of the very big man, Bajwa mushroom farm. It is in Kurukshetra, Haryana. Madam, he is having 400 to 500 persons in his mushroom unit. Imagine, ये आदमी 11वीं पास है. Mr. Harpal Singh Bajwa is only 11th pass. He is practicing button mushroom cultivation. He is going for seasonal cultivation of button mushroom, and he is a crorepati man. He is a crorepati man. He is going to visit very shortly to our laboratory to Chhattisgarh, because I delivered a talk in one of the national symposium. He was so much glad. He was so much impressed that he wanted to visit Chhattisgarh. Now, another very important person is Padam Sri Kamal Singh Chauhan. He is maintaining a Pratibha Food Aterina in Haryana. He is offering job to 400%. Sri Rajesh Gupta, he is again from Haryana. He is offering job to 250%. He is having the mushroom processing unit. He concentrates only in processing of button mushroom, nothing else. Health benefits of mushroom: boost your immune system, improves your health, heart health, gives you antioxidant, kicks up your metabolism, increase your vitamin D content, and good for your bladder. So I think mushroom has everything in it. Another very important point is, यदि आप जितनी वेजिटेबल्स खाते हैं और जितनी वेजिटेबल्स खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मशरूम साइंटिस्ट हो. आप देख सकते हैं कि ये ब्रोकोलाई को बहुत ही न्यूट्रिशियस वेजिटेबल कहा गया है, जिसके अंदर मात्र 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, परंतु मशरूम के अंदर 17 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. हाउ न्यूट्रिशनली रिच मशरूम इज, I think that is why it is considered as a source of powerful nutrients with many of the nutritional attributes are produced as well as attribute more commonly found in meat, beans, grains. जो चीजें मीट में है, जो चीजें ग्रेन्स में है, जो चीजें बीन्स में है, जिस लेग्यूम्स को हम मशरूम प्रोटीन के कारण जानते हैं, मैं आपको बताऊं कि मशरूम के अंदर 32 से 46% तक हाईली डाइजेस्टेबल प्रोटीन होती है. और जिन लेग्यूम्स को हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रोटीन चिकपी में होती है, वो होती है 25%. आज से मशरूम खाना शुरू कर दीजिए, उगाना शुरू कर दीजिए. ये देखिए मिल्क के अंदर कितनी क्वालिटी की, बायोलॉजिकल क्वालिटी की प्रोटीन होती है और मशरूम के अंदर कितनी होती है. आप देख लीजिए मीट और फिश, जो वेस्ट बंगाल के या जो
सी कैचमेंट के लोग जो हैं वो दे से दैट फिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर डाइट। आई टेल यू, मीट और फिश के अंदर जो है वो मशरूम के अंदर है। तो आज से मीट छोड़ दीजिए, फिश छोड़ दीजिए, मशरूम को अपनाना शुरू कर दीजिए। आपका लेग्यूम और सीरियल्स के अंदर जो कुछ नहीं है वो मशरूम के अंदर है। इट इज अ रिच प्रोटीन सोर्स हैविंग ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड. It is highly rich in vitamin B complex, vitamin D, vitamin C, which is very important under the during this prevailing situation of COVID-19. And it is very low calorie food, no cholesterol, no starch. It is the delight of the diabetes. It has a lot of flavonoids and lot of antioxidant. And due to this, it is very good. Vitamin 3 in oyster mushroom is 5 to 10 times higher than any other vegetables. Good source of vitamin B complex. और जैसा मैंने आपको बताया, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन कंटेंट जो oyster mushroom का है, it double the amount available in beef, pork, chicken. मशरूम से सुंदरता आती है मैडम। 60 साल की है लेडी जो है 35 साल की दिखती है, खाना शुरू कर दीजिए, you will realize the importance of mushroom. It has polysaccharide, triterpenoid, addition and what not. 2 दिन लगेगा पूरा यदि बताऊंगा आपको। तो मशरूम के अंदर क्या होना चाहिए यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम मशरूम को मात्र 40 ग्राम से 50 ग्राम हिंदुस्तानी खाते हैं, और जो चाइनीज है वो 20 से 22 किलो मशरूम पर कैपिटा कंजम्पशन एक साल में है। इसीलिए ये चाइनीज जो है सारे ओलंपिक के रिकॉर्ड तोड़ते हैं। दे आर हेल्दी, वो ट्रैक्टर ड्राइव करते हैं, वो बस ड्राइव करते हैं, वो क्या नहीं करते ये बता दीजिए। और हिंदुस्तानी जो है और उनका दिमाग कितना दिमाग काम करता है। नाउ दे हैव रियलाइज्ड, they have made realize the entire world what is there in Chinese. Now even USA is afraid of, with the kind of technological development taking place in China, the kind of development taking place in China, the कितने पेटेंट वो निकाल रहे हैं एक साल में, कितनी रिसर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बड़े मुश्किल से 2,10,000 मीट्रिक टन मशरूम होता है, और हम 60 से 70% मशरूम जो सबसे ज्यादा आवश्यकता हिंदुस्तान को है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं अमेरिका को। मुख्य रूप से 80-90% एक्सपोर्ट हमारा अमेरिका को जाता है। और ये देखिए कि जो 32 मिलियन टन मशरूम को उगाता है वो बड़े मुश्किल से 5% मशरूम को एक्सपोर्ट करता है। मैडम गिगी थॉमस, देख लीजिए ये डाटा। ऑर्डिनरी मार्केट में आपको 60 प्रकार के मशरूम मिल जाएंगे। मैं प्योरली वेजिटेरियन हूँ, मैं चाइना में 15 दिन था। एक मशरूम की डिश ब्रेकफास्ट में, एक लंच में और एक डिनर में, 15 दिन में कोई भी डिश रिपीट नहीं हुई। 45 मशरूम खाया मैंने 15 दिन में, और 15 दिन और रुकना पड़ता 60 मशरूम को खाने के लिए। सी हाउ इम्पोर्टेंट मशरूम इज इन देयर कंट्री. China is the largest producer, consumer, exporter of mushroom after USA and Netherlands, and the world production of mushroom is 40 million ton, and China grows more than 60 varieties of mushroom. ये देखिए मैडम, सिंगापुर के शॉपिंग मॉल में किस तरीके से मशरूम को पैक किया जाता है, मार्केट किया जाता है, लोग किस तरीके से मशरूम को चाहते हैं, उसके लवर हैं, मशरूम लवर्स हैं, मशरूम के रखवाले हैं, मशरूम के जानने वाले हैं, खाने वाले हैं, रिस्पेक्ट करने वाले हैं। यदि आप इंडिया में देखें तो इंडिया में मशरूम भी इंडिया में बहुत सारे नेचुरली ग्रो होते हैं। ये बहुत बड़ा मार्केट है छत्तीसगढ़ में ये मशरूम का, जिसे हम फुटू कहते हैं। और मैडम रत्ना नसी ने जानती है, पूरे जगदलपुर एरिया में, पूरे बस्तर प्लेटू में इस मशरूम की खदान है, खान है कहूँगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यदि आप नॉर्दर्न हिली रीजन में जाए तो वो भी खान है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये मशरूम 3,000 रुपए किलो बिकता है। इसको साल बोडा कहा जाता है। ये कैंथेरेलस है। देखिए किस प्रकार से मजमूल बाजार लगा हुआ है। और प्रोटीन कन्वर्जन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मशरूम पर यूनिट एरिया एंड टाइम इज फार सुपीरियर देन एनी अदर प्लांट एंड एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये नेशनल सिनेरियो है। आज मशरूम का प्रोडक्शन, ये पहले का डाटा है, 2,10,000 मीट्रिक टन पहुंच चुका है। और ये लगभग छत्तीसगढ़ में 5,000 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ये होता है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ये चारों मशरूम हिंदुस्तान में बहुतायत रूप से उगाए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। मशरूम ने बदले 3 माह में 1 लाख की कमाई।
यूट्यूब की मदद से 3 साल में 100 बैग से मशरूम की खेती करने वाले धर्मेंद्र उज्जैन बने आइकॉन। का कहरा पढ़ाने वाले गुरुजी ने सीखी मशरूम की खेती। मशरूम की खेती से बन सकते हैं स्वावलंबी। मैं आपको बताऊं कि आज मशरूम की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत तेजी से लोग इस पान बना रहे हैं, उगा रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, वैल्यू एड कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ये देखिए सुंदर सुंदर महिलाएं मशरूम को उगा रही हैं, बीज बना रही हैं। ये देखिए गांव की महिलाएं बीज बना रही है। हमारे यहाँ से आकर के मदर स्पान ले जाती हैं और वो प्लांटिंग स्पान खुद तैयार करती है। ये देखिए बहुत सारी स्वसहायता समूह की महिलाएं, 85,000 self-help groups are there in our country. And Madam Gigi Thomas, if these groups are sensitized for cultivation of mushroom, I tell you, no woman will be economically poor. All women in this country will be enriched. They will be economically very sound in if they practice mushroom cultivation. मशरूम कल्टीवेशन में एक ही चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का रेशो। यदि ये 4 चीज को आपने अपने बस में कर लिया तो आप मशरूम को नचा सकते हैं। जैसा बंदर, जैसा मदारी बंदर को नचाता है, आप मशरूम को नचा सकते हैं। ऐसा नचने का ऐसा मैंने मेक्सिको में देखा, चाइना में देखा, सिंगापुर में देखा, थाईलैंड में देखा। I visited these countries, I visited the commercial units of mushroom, और मैं आपको बताऊं कि उनको मशरूम को निकालना पड़ता है, चुनना पड़ता है। जैसे हम वीडिंग करते हैं ऐसा उनको मशरूम की वीडिंग करनी पड़ती है, तब उनको डिजायर्ड लेवल के फ्रूट मिलते हैं। इतनी ज्यादा ग्रोथ होती है। मशरूम में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो है इंडक्शन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। ये जो इंडक्शन है फ्रूटिंग बॉडी का, यही यहाँ साइंस इन्वॉल्व है। अदरवाइज मशरूम कल्टीवेशन ये पूरा आर्ट है। और ये कैसे फ्रूटिंग बॉडी का इंडक्शन होगा, ये उस समय होता है जब हम इस प्रकार से इन्वायरमेंटल शॉक्स देते हैं, जब हम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाते हैं, लाइट कम करते हैं, ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। ये हर मशरूम के लिए अलग अलग है। यदि आपने इसको समझ लिया, चाइना ने 65 प्रकार के मशरूम को उगा लिया है। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया है कि ये मशरूम को उगाने के लिए कौन से इन्वायरमेंटल कंडीशन, कौन से बायोलॉजिकल कंडीशन, कौन सी माइक्रोबायोलॉजिकल कंडीशन, कौन से फैक्टर्स हैं जो चाहिए, तो उन्होंने समझ लिया है। इसलिए आज वो 60 प्रकार के मशरूम उगा सकते हैं। हिंदुस्तान वाले आज का मात्र 4-5 प्रकार के मशरूम को अच्छे से समझ पाए हैं। शायद यही कारण है कि हम 4-5 प्रकार के मशरूम को उगा पाने में कामयाब है। ये देखिए एक मशरूम है जो उड़ीसा की शान है। इसे पेडिस्टा मशरूम कहा जाता है। इसकी सेल्फ लाइफ 24 घंटे है। बहुत ही बढ़िया मशरूम है, बहुत स्वादिष्ट है। और ये देखिए, ये एक राजेंद्र साहू करके है, महासमुंद जिले में उगाता है। इसको नेशनल अवार्ड मिला है। ये देखिए किस प्रकार से कम एरिया में मशरूम की, पेडिस्टा मशरूम की खेती, ये नेशनल अवार्ड इसको, हमको पिछले साल इसको नेशनल अवार्ड मिला। ये देखिए मल्टी लेयर तरीके से, ये देखिए कोरबा में इस प्रकार से खेती हो रही है। यहाँ देखिए इस प्रकार से पेडिस्टा मशरूम की खेती हो रही है। ये देखिए हमारे महासमुंद जिले में इस मशरूम की खेती महासमुंद जिले में हो रही है। ये देखिए ये हमारे आइकॉन है जांजगीर में। ये दोनों हस्बैंड वाइफ जांजगीर में आइकॉन है। और ये लार्ज स्केल में सीपी चंद्रा एंड भदौरा विलेज जांजगीर में है। वहां पर ये पेडिस्टा मशरूम की खेती कर रहे हैं। इस प्रकार से पेडिस्टा मशरूम आप देखिए। और आयस्टर मशरूम ये दूसरा मशरूम है। ये एक गुजरात की एक फर्म है जिन्होंने इस तकनीकी को खोजा है। और वो कहते हैं कि इस तकनीकी में, यदि आप इस तकनीकी से, उनका ये ऑर्गेनिक फार्म है, यदि आप उनके ऑर्गेनिक फार्म जो उन्होंने तकनीकी डेवलप की है, यदि उस तकनीकी का इस्तेमाल करके इस प्रकार के स्ट्रक्चर को आप बनाते हैं, तो उनका ये मानना है कि आप 3000 स्क्वायर फीट में 5 मीट्रिक टन मशरूम एक माह में ले सकते हैं। और ये कौन बंदा है? ये एक अहमदाबाद की फर्म है। ये इसका मोबाइल नंबर है, आप इनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। मेरे को थोड़ा विश्वास कम होता है, इतना मशरूम इतने कम समय में हो सकता है। मशरूम हो तो सकता है, लेकिन 5 टन में थोड़ा मेरे को डाउट है। आप चाहें तो 20 लाख की लागत से ये प्रोजेक्ट जो है, आप इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अलग अलग फेज पे आपको पैसे देना है। पूरी गारंटी, पूरे स्ट्रक्चर की गारंटी A to Z, और पूरा मार्केटिंग का सारा की सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, MOU है, वो खुद साइन करते हैं।
आप इनसे मिल सकते हैं, साइन कर सकते हैं, ये इनका ईमेल एड्रेस है और इनसे संबंध बना करके इस काम को अंजाम दे सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार, नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी, मैं समझता हूँ ये जो नारा उन्होंने दिया है, इस नारे में आइस्टर मशरूम की खेती बहुत अच्छे से हमारे गोठान में चल रही है। ये महिलाएं मशरूम की खेती कर रही हैं, इनको आप देख सकते हैं, तरह तरह अलग अलग महिलाएं जो है ये छत्तीसगढ़ की इस प्रकार से कच्चे मकान में, खपड़े मकान में, अलग घर में बहुत कम एरिया में आप मशरूम की खेती आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक यूकेएस मशरूम है। इस बंदे को अभी 10 सितंबर को नेशनल रिसर्च सेंटर, जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च है होशंगाबाद, यहाँ सोलंग में, हिमाचल प्रदेश में, वहां से इसको अभी नेशनल अवार्ड मिला है। और ये राजनांदगांव में लगभग 1 क्विंटल प्रतिदिन मशरूम ग्रो करता है। इसका नाम है यूकेएस मशरूम। ये जंगलपुर का रहने वाला है, छुई खदान जो राजनांदगांव में है, और वहां पर इस प्रकार से आइस्टर मशरूम की खेती करके और ये आज 20 लोगों को रोजगार दे रहा है। आप देख सकते हैं, मशरूम उत्पादक सौरभ को राष्ट्रीय सम्मान, मशरूम की खेती कर युवाओं के लिए पैदा किया रोजगार, मशरूम उत्पादन में सौरभ को मिला राष्ट्रीय सम्मान। मिस्टर सौरभ जंघेल, मोबाइल नंबर, नवभारत, अभी 19/9 की नवभारत में ये सारी प्रेस रिलीज आई हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने युवा शक्ति को हार्दिक शुभकामनाएं। मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में मिली पहचान, छत्तीसगढ़ के युवा किसान सौरभ जंघेल को राष्ट्रीय सम्मान। और छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो महिलाओं को, आपने सुना होगा बीजापुर जो नक्सलाइट बेल्ट है, बीजापुर में स्व सहायता समूह की महिलाएं आइस्टर मशरूम का उत्पादन करके आत्मनिर्भर बन रही हैं। मशरूम बेच के करीब 17,000 की आमदनी। ये माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने नारा दिया है, नारी आयु बढ़ी समृद्ध छत्तीसगढ़ गढ़ी। यदि महिला की आयु बढ़ेगी तो छत्तीसगढ़ समृद्ध होगा। ये छत्तीसगढ़िया सरकार सहयोग पाके ये जो नारा है वो है हमारे चीफ मिनिस्टर माननीय सीएम श्री भूपेश बघेल का। ये देखिए, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में, नारायणपुर के क्षेत्र में इस प्रकार से ये गरीब महिलाएं मशरूम को अपना रोजगार बना करके, और ये महिला के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2009 में मेरे से ट्रेनिंग ली थी। आज पता नहीं कितनी बार ये उसकी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी टेलीकास्ट हो चुकी है जगदलपुर के टेलीविजन से। तो इस प्रकार से ये देखिए, प्रधान ग्रुप में जो महिलाएं, ये नम्रता घई है जिसके विषय में थोड़ा आप आगे देखेंगे। गांव की महिलाएं जो अनपढ़ हैं, एससी की महिलाएं, एसटी की महिलाएं, ये महिलाएं बहुत कम क्षेत्र में रोजगार मशरूम से अर्जित कर रही है। ये एक नई तकनीकी है जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने अर्जित की है, और ये वैरायटी है 2006 में मैंने रिलीज की थी। बहुत ही सुंदर वैरायटी है, और इसमें इस प्रकार से घर घर खेती करके मशरूम की, ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोगों ने अपनाया, और अब अलग तरीके से इस टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने बढ़ाया है। और आप ये देख लीजिए, नेशनल मशरूम मेला में 2018 में पहला इनाम जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य को मिला है। ये बटन मशरूम की खेती आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जो नॉर्दर्न हिली रीजन है हमारा, वहाँ बटन मशरूम की खेती की जा रही है। और ये देखिए, कंट्रोल कंडीशन में, जहाँ एयर कंडीशनिंग लगा करके, और लगभग 2500 मीट्रिक टन मशरूम जो है छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ हो रहा है। ये बटन मशरूम की खेती करके हो रहा है। ये मिल्की मशरूम है। मिल्की मशरूम को भी आसानी से 6 माह से 8 माह तक आसानी से आप उगा सकते हैं। बहुत अच्छा मशरूम है। तमिलनाडु इसकी खेती बहुत ज्यादा होती है, अभी पंजाब में, हरियाणा में, कर्नाटका में, उड़ीसा में, और छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसकी तेजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब तीसरा आयाम जो है जिसके विषय में बात करूंगा आपसे, वो है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू वैल्यू एडेड मशरूम बेस्ड प्रोडक्ट। मैं आपको बता दूं मैडम कि छत्तीसगढ़ में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। हिंदुस्तान में 56 भोग बनाए जाते हैं। मशरूम एक ऐसा आहार है जो हाईली न्यूट्रिशियस है, मेडिसिनल है। तो हम ना क्यों, हर महिला क्यों ना मशरूम को अपने किचन में ला करके और अपने मीनू में इसको सम्मिलित करे। मैं आज सारी महिलाओं से जो मेरी वाणी को सुन रही हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, आज मेरा लेक्चर यदि सफल हो जाएगा, यदि सारी महिलाएं मशरूम को अपने किचन की मीनू की एक डिश बना लें, और वो डिटरमिन हो जाएं कि कम से कम एक सप्ताह में 2 दिन 3 दिन मशरूम खाना है,
और मशरूम के क्या फायदे हैं तो आपको पता है। ये देखिए 5% मशरूम पाउडर मिलाए हमने चावल के पापड़ में, तो ये टेस्टी चावल का पापड़ तैयार हो गया। ये देखिए थार फूड करके है, जो तरह तरह की फ्रेश मशरूम, सिटाके मशरूम, ये पता नहीं मशरूम पिकल बना रहे हैं, मशरूम नूडल्स, मशरूम पाउडर, मशरूम भुजिया, मशरूम बड़ी और मशरूम सूप पाउडर, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। इस प्रकार के ढेर सारे प्रोडक्ट मशरूम प्रोसेस करके और वैल्यू ऐड करके आप बना सकते हैं। ये रायपुर में मेरे ऑफिस के बाजू में एक सेंटर है जिसका नाम बिहान है, और वहाँ जिला प्रशासन जो है वो करीब करीब 30-40 महिलाओं से ये ऑयस्टर मशरूम प्रोसेस करके और मशरूम शक्ति के नाम से मशरूम पाउडर को बेच रहा है। और आप ये देखिए, ये महिलाएं उगा रही हैं, ड्राई कर रही हैं, पाउडर बना रही हैं और मशरूम शक्ति बना करके बेच रही हैं। और ये पाउडर इतना अमूल्य है, और विशेष रूप से आज के कोविड-19 की सिचुएशन में यदि आप इसको 2 चम्मच सुबह खा के खाली पाउडर खा के और पानी पी लें, 2 चम्मच शाम को खा के पानी पी लें, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जिंक की टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, आपको आयरन की टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, आपको कैल्शियम की टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और आप देख सकते हैं, हमने इस पाउडर को कैप्सूल में भरा और 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को खाइए। 10 दिन खाइए, आराम ना मिले तो मत आइए। और ये सदगुरु कबीर बायोटेक जो आत्मा समूह है, ये छत्तीसगढ़ में है, ये इस प्रकार की कैप्सूल को बेच रहा है। डायबिटीज के लिए बेच रहा है, जॉइंट पेन के लिए बेच रहा है, एनीमिया के लिए बेच रहा है, जॉइंट पेन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, पैरालिसिस के लिए, और अच्छा खासा मुनाफा ये ग्रुप कमा रहा है। आप चाहें तो 2% मशरूम का पाउडर गेहूं के आटे में मिलाइए। 1 किलो गेहूं में मात्र 20 ग्राम पाउडर यदि आप मिला दें तो आपका आटा न केवल न्यूट्रिशियस होगा, बल्कि ये मेडिकेटेड आटा हो जाएगा। यदि कोई एंटरप्रेन्योर इस क्षेत्र में आके आगे बढ़ना चाहता है तो मैं उससे दरख्वास्त करूंगा कि वो मशरूम फोर्टिफाइड व्हीट फ्लोर जो है अपने ब्रांड के नाम से आराम से लागू कर सकता है। ये नाम है नम्रता घई का, जिसका छत्तीसगढ़ मशरूम के नाम से एक बहुत बड़ी यूनिट छत्तीसगढ़ में है, और ये पूरे देश में इस महिला को लोग जानते हैं। सी इज एन आइकॉन ऑफ मशरूम, मशरूम स्पान प्रोडक्शन, मशरूम क्रॉप प्रोडक्शन, मशरूम मार्केटिंग एंड मशरूम डिसेमिनेशन टेक्नोलॉजी आल्सो। पता नहीं हजारों लोग इससे साल भर में ट्रेनिंग लेते हैं। अभी 35 टन मशरूम का बीज बना करके ये महिला लॉकडाउन के पीरियड में बेच रही है, और लगभग 20 लाख रुपए इसकी साल की इनकम है। केबीसी में आज देखें, शहर की नम्रता का ज्ञान एमएससी केमिस्ट्री है, और शायद इसी उसके आशा ने इसको अमिताभ बच्चन जी तक, जो इस सदी के महानायक हैं, उन तक भिजवा दिया। और कौन बनेगा करोड़पति से इसने 25 लाख रुपए जीत के आए हैं। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक हैं, डॉक्टर आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, और उन्होंने इसको ये अवार्ड दिया था। आसपी का 1 लाख कैश प्राइज मुंबई में इनको मिली थी, और ये नाम है जिसका नाम है नम्रता यदु। नम्रता यदु सुश्री घई आसपी अवार्ड से सम्मानित, मशरूम की खेती में नया इतिहास रचने वाली महिला किसान। नम्रता घई को फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। सी इज 4 in 1। शी इज प्रोड्यूसिंग मशरूम स्पान, शी इज कल्टिवेटिंग मशरूम, she is making mushroom vermi compost out of the spent mushroom, she is marketing mushroom, and she is imparting training program. Now she has become 5 in 1. Madam Gigi Thomas, she, the women who are committed, who are devoted, who are hard working, how much they can earn in a year with mushroom and how much recognition they can get. ये वो महिला है जिसने आईटी सेक्टर की नौकरी को छोड़ करके और उत्तराखंड में 204 बटन मशरूम की यूनिट को स्थापित किया है, और इसके माननीय मोदी जी भी मुरीद हो गए हैं। आज करोड़पति महिला के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी खुद की कंपनी है, एफएसएसआई का इसका लाइसेंस है, मशरूम स्वास्थ्य मसाला इसने लॉन्च किया है। और इस प्रकार से महिला क्या नहीं कर सकती। महिला वो शक्ति है, वो देवी है, वो दुर्गा है, वो सरस्वती है, और वो क्या नहीं कर सकती।
किसी ने कहा है when there is will there is a way. सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। दोस्तों कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो किनारे तो अपने आप बदल जाएंगे। शायद लास्ट स्लाइड कि मशरूम हैव ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स which are very important to address anemia, to address undernutrition, to address malnutrition prevailing in our country. It can boost, it can stimulate the immune system of the people suffering from COVID-19. Lot of technological advancement which has been taken place in the last year or in the last 1 or 2 decades. It has enhanced the productivity, processing value addition, and existing condition can help mushroom going into a cottage industry as well as into the commercial scale industry. Mushroom has enormous scope in offering employment opportunities, livelihood upgradation, and everybody is now looking after mushroom. स्किल इंडिया में स्किल विज्ञान में सबसे ज्यादा महत्व। कल मुझे छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक वैज्ञानिक का फोन आया, डॉक्टर ठाकुर आप क्या कर रहे हैं? स्किल विज्ञान के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट आपको सबमिट कीजिए फौरन। आज वो प्रोजेक्ट मेरा चला जाएगा। वो प्रोजेक्ट काहे का है? वो प्रोजेक्ट यूजी को, 10+2 के लड़कों को, फैकल्टी को, वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को, इनको सबको ट्रेनिंग देने का प्रोजेक्ट है। दे हैव इनफ मनी अंडर स्किल विज्ञान। आई वुड अर्ज एसएस कॉलेज, एसएस गर्ल्स डिग्री कॉलेज गोंदिया. Gondia is very close to my heart because I belong to Nainpur in Mandla district, and मैं जाता था वो छुक छुक गाड़ी से और गोंदिया रुकता था और गोंदिया से छुक छुक गाड़ी पकड़ के अपने वतन को, अपने गृह स्थल को जाता था, वो है नैनपुर. So I have a lot of attachment with peoples from Gondia, and if my expertise is required to the faculty of Gondia, I will be helpful, I will happy. And due to cheap agro waste available, utilization of airspace, deepening land, higher production rate, huge labor force, and the very important thing is you can double or triple the income within no time. So mushroom does not require much land. What it requires only will, nothing else. So at the end, I would only say, and I would urge all of you to kindly join mushroom growing, to kindly consume mushroom, to kindly create awareness about mushroom so that people of India, they start consuming mushroom and they may become nutritionally strong. And if they are nutritionally strong, then their mind will develop well and they will break all the records what is broken by the Chinese people. Again, I would extend my congratulations, I would extend my thankfulness to Sri Bahekar ji, who is the principal and convener of this two-day workshop. And again, I would extend my gratefulness to Madam Ratna Naside, who is a dynamic lady. She is always ready. She is willing to help people, and she is also all in well. She is a very bold lady, and you can seek advice all the time from a lady who is working in a very hard place. You must have heard about Narayanpur. Narayanpur ये बारूद पे खड़ा हुआ जिला है, जहां पर आप शहर के बाहर निकलना नामुमकिन है। ऐसी जगह में नारायणपुर की वो झांसी की रानी, जिसको रत्ना नसीने के नाम से जाना जाता है, वो अपने करकमलों से उस महाविद्यालय को और उस जिले को ऊंचा करने में कामयाब हैं। डॉक्टर रेखा तिवारी, डॉक्टर खांडेकर मैडम जो को कन्वीनर हैं एसएस गर्ल्स डिग्री कॉलेज की. Again, I would extend my thankfulness to all of you. Thank you very much. Thank you so much. If you have any query, you are welcome. Thank you, Dr. MP Thakur sir. Sir, कुछ questions आए हैं chat box में. बिल्कुल welcome. हाँ. सर मेरा भी एक डाउट है. रेखा लिल्लारे मैडम, मुझे भी एक डाउट है. Yes sir. हेलो. हाँ बोलिए. ठाकुर सर नमस्ते. नमस्ते ठाकुर सर नमस्ते.
नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है सर, बहुत ही अच्छा रहा आपका लेक्चर, बहुत ही अच्छा रहा सर। बट एक थोड़ा छोटा सा डाउट है सर मुझे। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे मशरूम की खेती है सर, एक तो ग्रोसरी शॉप में बंद डब्बे में भी आते मशरूम जी, नेचुरल वे में रेनी सीजन में भी उगते हैं, और जो खेड़े गांव के लोग हैं, विलेजर्स आते हैं, उसको बेचने के लिए आते हैं शहरों में कुछ दिनों के लिए, लॉन्ग पीरियड नहीं होता है सर। और एक आर्टिफिशियल मीन्स जैसे एक मकान में जो धान का पैरा होता है ना सर, और वो पैरे पर वो उगाते हैं लटका कर वो मशरूम, तो ये मीन्स टाइप्स ऑफ मशरूम जो उगाने का तरीका है सर मशरूम को, और मशरूम हमारे सामने आ जाता है। बट क्या उनमें जो जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है, और भी न्यूट्रिएंट जो भी मिस थिंग्स है, विटामिन है, वो क्या डिफरेंट होते हैं क्या सर, कि एक तरीके होते हैं? डिफरेंट है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। आप कहाँ उगा रहे हैं, कैसे उगा रहे हैं, कब उगा रहे हैं, कौन से वातावरण में उगा रहे हैं, इसका असर पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो डिफरेंस है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, वो डिफरेंस जो है नॉन सिग्निफिकेंट है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जितने भी मशरूम हैं, हर मशरूम चाहे वो नेचुरली ग्रोइंग हो, नेचुरल ग्रोइंग मशरूम इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली। यू विल वंडर टू नो अबाउट कास्ट ऑफ नेचुरली ग्रोइंग मशरूम। इट कास्ट, वो टेस्टी भी होते हैं सर एज कंपेयर अदर मशरूम्स, वो टेस्टी भी होते जो रेनी सीजन में आते हैं सर। 20 लाख रुपीस कास्ट है मशरूम की, नेचुरली ग्रोइंग मशरूम का। एक कार्डिसेप्स साइनेंसिस है 20 लाख रुपीस एक केजी। और हम लोग चूंकि इसके विषय में जानते नहीं है, ये पूरे हमारा जो उत्तराखंड का एरिया है नेपाल बॉर्डर से, ये चाइना को एक्सपोर्ट होता है। 5,000 10,000 में वो लोग इसको 5,000 10,000 में बेच देते हैं, because they do not know the value of it. It has lot of antioxidant property, it has lot of antimicrobial property, antiviral property, antifungal property, antibacterial property, lot of microbial activity this mushroom is having. So they have explored, China, Japan, USA, Germany, they have explored the medicinal potential of these mushroom, and now lot of mushroom medicines are available in the world market. हिंदुस्तान में आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हमारे यहाँ से जो मलेशिया से हमारे यहाँ जो कैप्सूल आ रही है, वो कैप्सूल 1580 रुपए की 100 कैप्सूल है, 1580 रुपए की, यानी 180 कैप्सूल 1580 रुपए की है। और 90 कैप्सूल जो है मशरूम माइसीलिया की बनी है, और 90 कैप्सूल जो है वो उसकी प्रोटीन बॉडी की बनी है। तो वी डू नॉट रियलाइज, वी डू नॉट रिस्पेक्ट, वी डू नॉट नो अबाउट द मशरूम पोटेंशियल, मशरूम हेल्थ, मशरूम की जो स्ट्रेंथ है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। लेकिन बाहर के देशों में ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। हेलो, जो आप बोल रहे थे वो पैडीस्टा, ये बहेगर साहब, जो आप बोल रहे थे वो ये मशरूम है, ये पैडीस्टा ही मशरूम है, ये वही मशरूम। ओके ओके सर, और एक बात हो, जो मशरूम जो रेनी सीजन में निकलते हैं उसके बाद में, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस मशरूम ना? ये देखिए लड़का ने जो हाथ में लिया है, ये वही पैडीस्टा मशरूम है, ये पैडीस्टा में निकल रहा है, पैडीस्टा मशरूम। दिस इज कॉल्ड पैडीस्टा मशरूम, पैडी मशरूम, या पैडीस्टा मशरूम। Okay, thank Hello, you. Thakur sir, I have one question. Hello, Lilari madam, I have one question. I want to ask one question. Yes, sir. Yes, sir. Please ask. Sir, myself, Mr. M.B. Kurve from the Biology Department, SS Girls College. I have one question, sir. And that is that how do we correlate this COVID-19 during this pandemic situation with the this you know, a lot of research has been done on this mushroom, and how do we correlate that it's an antiviral, so antiviral property we want to suppose we want to extract from that, then how do we correlate this for the medicinal मैं आपको ये स्लाइड दिख रही है आपको? Yes, you are visible to see this slide. mushroom as a medicine. Mushroom have enormous medicinal value, bioactive compounds, polysaccharide, more than 100 kinds of long chain polysaccharides are present in mushroom. Triterpenoids, more than 100 types, lantinan, adenosine, ligniate, polysaccharides, crustine, polysaccharide peptide, irritadine, butyric acid. I tell you, these are all the bioactive compounds which are present in mushroom. And some of the mushroom, see this mushroom is called Ganoderma lucidum.
नाउ दिस, और ये देखिए इसकी कैप्सूल है, ये 1580 रुपए की 100 कैप्सूल ये और 100 कैप्सूल ये 1580 रुपए की है। और देश पूरे वर्ल्ड के 45 कंट्री में ये कैप्सूल बेची जाती है। ये एंटी कैंसरस ड्रग है। और जो आपका क्वेश्चन था वो मैं आपको बता रहा हूं कि मशरूम हैज गॉट द कैपेसिटी टू स्टिमुलेट द, it strengthen the cells which has become inactive or at the verge of inactivity they have gone. तो उसमें जान फूकने का काम जो है ये मशरूम करता है, इसलिए इसको एंटी कैंसरस कहा गया है। और दूसरा एक और आपको बताऊं कि ये जो सेलेनियम है, बहुत सारे एंटी कैंसरस ड्रग में सेलेनियम होता है, सेलेनियम इसके अंदर है। तो ये जो सेलेनियम है और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये जो पॉलीसेकेराइड्स स्पेशली हैं और ट्राइटर्पेनॉइड, they enhance the immunity. As a result, your body becomes immune and it can fight well against not only the viruses but against even bacteria, against fungi, against virus, against several kinds of microorganisms. जैसे आपको मैं सिटाके मशरूम बताऊं, सिटाके मशरूम उसमें it has anti-AIDS property, antiviral property it has. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है ये जो लेंटिनन है, Lentinan is a protein-bound polysaccharide extracted from Lentinula adode, which is a medicinal mushroom. It is both. It is medicinal as well as edible. और ये जो edible ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो एक मिनट आपको जस्ट ये देखिए, ये स्लाइड देखिए आप, ये जो इट रिड्यूस साइड इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सबसे बड़ा। और दूसरा ऐसे सेल कार्सिनोमा, आप जानते हैं कार्सिनोमा से सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है, विद नो टाइम ट्यूमर बन जाता है। तो ये ट्यूमर के जो सेल के डिवीजन को प्रिवेंट करने में, रोकने में ये मशरूम का बहुत बड़ा योगदान है। इट प्रिवेंट्स द सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन इन द कैंसरस सफरिंग पेशेंट। ये उसमें जान फूकने का काम करता है। तो इट डेवलप्स इम्यूनिटी एंड इट एनहांसेस द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये इसका बहुत बड़ा रीजन है, और जिसके की कारण ये जो बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग, बूस्टिंग एंड एक्टिवेटिंग द इम्यून सिस्टम। देखिए आपकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल हो सकते हैं, बट अनलेस दीज chemicals are activated in a particular period of time, it has no meaning of presence. They have to be activated when your body is succumb to that particular virus. जैसे ही वायरस ने पेनिट्रेट किया, आपकी बॉडी एकदम से उसमें इम्यूनिटी आना चाहिए। तो उस एक्टिवेशन के लिए मशरूम जिम्मेदार है, टू बूस्ट द इम्यूनिटी, टू स्टिमुलेट द इम्यूनिटी एंड टू एक्टिवेट द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ योर बॉडी। ये इसका काम है। इसीलिए still we are lagging behind, sir. Still we are lagging behind, we are lagging behind because a lot of the people they are unable to they don't have the awareness to grow about that. Is why the people like you, all the biologists, they have to publish paper, they have to bring these things in the social media, print media. Now social media is becoming very common everywhere. Why don't we create such kind of awareness about the mushroom? That it's a health food. I tell you, in 2012 जब सार्स और मार्स आया था चाइना में, मशरूम का कंजम्पशन उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ा हुआ। क्यों? क्योंकि इसने वो वायरस को, सार्स जो वायरस है जो कि कोविड का ही एक नया रूप है, उसको कंट्रोल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और मैं तो ये कहता हूं कि हिंदुस्तान में अभी भी इम्यूनिटी को क्रिएट करने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में, बूस्टिंग करने में मशरूम के पाउडर का बहुत बड़ा योगदान अभी भी है। बट स्टिल पीपल्स आर नॉट अवेयर ऑफ इट, दे हैव टू मेक अवेयर। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. संदीप को उगाने के लिए सरकार की तरफ से कोई योजनाएं हैं क्या? सरकार की तरफ से योजनाएं हैं। जहां नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन चल रहा है, वहाँ 3 प्रकार की योजनाएं हैं। एक मशरूम बीज बनाने की है, जिसमें 15 लाख का लोन मिलता है। 50% 50% आपको वहन करना है, 50% जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। एक मशरूम ऑयस्टर मशरूम प्रोडक्शन की यूनिट के लिए है, वो 20 लाख की योजना है। उसमें आपको 10 लाख आपको वहन करना पड़ेगा, 10 लाख गवर्नमेंट बियर करती है। और एक और योजना है
जो इंटीग्रेटेड मशरूम यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए है, जिसमें आपको न केवल मशरूम की यूनिट एस्टेब्लिश करना है, बल्कि आपको ट्रेन होकर ट्रेनिंग देने का भी है। उसमें यू हैव टू ट्रेन पीपल आल्सो, सो यू हैव टू कीप द मैकेनिज्म, कीप द प्रोविजन of training also. So that is called integrated mushroom unit, and for that there is a provision of 50 lakhs rupees. And all these three schemes are there. These are called central sector scheme, और जो कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के द्वारा संचालित है। आपको करना ये पड़ेगा कि जिसको मशरूम में इंटरेस्ट है, he has to approach the assistant director horticulture in a district, or he has to move his proposal through assistant director horticulture. That proposal will go to the state, and there is a executive committee at the state level. That committee, executive committee, in which I am also a member in Chhattisgarh, that committee finalizes the proposal, and fund is made available to the entrepreneur. So, but if you are in a school, if you are in a college, in a public sector, this amount is 100%. Say, for example, if somebody, some said, Mr. Dhruve, am I correct, Dhruve ji? Dhruve ji, am I correct? Dhruve ji, are you listening me? If you want to establish a mushroom spawn laboratory in your unit, I tell you, in public sector, there is a 100% subsidy is there, but it is only in government organization. 100% subsidy is there in establishing the mushroom spawn unit, cultivation unit, and even for button mushroom there is a compost making unit. So for compost making unit there is a provision of 20 lakhs rupees. So subsidies are available. Government subsidies are available, banks are funding, even a lot of money is given by NABARD, even Punjab National Bank they are funding, State Bank of India they are funding. So there are, when there is a wish, when there is a will, there is a way. You can come out with the solution. Next. Okay, thank you, sir. Ayush Kumar. Yes, sir, Ayush Kumar is asking, is there any subsidy for mushroom production project? बताया ना मैडम अभी श्री आयुष कुमार। जी हाँ, आपने बताया। यस सर, आपने अभी बताया है। और रुचि सर का है, ये पूछना चाह रही है कि मशरूम किस प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है सर आपने इसके बारे में भी डिटेल गाइडलाइन दिया है, फिर भी वो जानना चाहती है कि मशरूम किस प्रकार से स्टार्ट किया जा सकता है। मशरूम स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत कम संसाधन की जरूरत होती है। यदि आपको मशरूम को उगाना है तो यू स्टार्ट विद ऑयस्टर मशरूम। ये जो ऑयस्टर मशरूम है, देखिए ये देखिए, ये ऑयस्टर मशरूम है। ऑयस्टर मशरूम को उगाने के लिए आपको केवल पैडिस्टा चाहिए, और पैडिस्टा को थोड़ा सा रात भर पानी में भिगोना पड़ता है, सवेरे पानी से निकाल लीजिए, और पानी से निकाल करके इसमें गर्म पानी मिलाना पड़ता है। यदि क्वांटिटी वाइज यदि मैं आपको बताऊं तो आप 10 किलो सूखा भूसा ले लीजिए, गेहूं का भूसा है या पैराकुट्टी है। 10 किलो भूसा को 100 लीटर पानी में ले लीजिए, और 100 लीटर पानी में भूसा को भिगा दीजिए रात भर। सुबह जो है पानी निथार दीजिए, और इसमें खौलता हुआ 25 लीटर गर्म पानी डाल दीजिए। 1 घंटे गर्म पानी में भूसे को डले रहने दीजिए, तो भूसे के अंदर जो भी माइक्रोब्स है वो सब खत्म हो जाते हैं। और इसको सुखा करके जब इसका मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाए, लगभग 70% रहे, तो इसमें आप बाजार से इस प्रकार के बीज ला करके डाल दीजिए। इसका बीज जो है बाजार में मिलता है, कई जगह मिलता है, मशरूम स्पॉन लेबोरेटरी में मिलता है। और जब आप इसमें बीज को डाल देंगे तो बीज को डाल करके इस प्रकार से पॉलीथीन में भर दीजिए। देखिए इस प्रकार से महिलाओं ने इसको भरा है। भरने के बाद जो है आप इसको चाहें तो ऐसे रख सकते हैं, ऐसे लटका सकते हैं, और लटकाने के बाद ये देखिए इस प्रकार से भी आप बीज को मिला सकते हैं। पहले भूसा का एक परत लिया आपने, फिर बीज की एक परत, यानी लगभग ये मान के चले कि 10 किलो भूसा में 1 किलो बीज लगता है। तो 1 किलो बीज को आपको 10 किलो भूसा में मिला के भी आप इस प्रकार से बैग बना सकते हैं, और ये परत विधि से भी आप बैग बना सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये जो आपने बीज डाला है, ये बीज पूरे भूसा में फैलता है, और आप देखेंगे कि 10 से 12 दिन में पूरी थैली जो है सफेद हो जाती है। देखिए पूरी थैली सफेद हो गई। जब ये पूरी थैली सफेद हो जाती है तो थैली को काट दीजिए या छेद कर दीजिए। छेद करने के बाद आप देखेंगे ये जो छेद आपने बनाया है, वो छेद से जो है वो मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। ये देखिए ये जो छेद बनाए थे आपने, वहां से मशरूम निकलना शुरू हो गया। तो आप देखेंगे कि 20 से 22 दिन में आपका ये मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से ये देखिए ये मात्र 25 दिन में। इसके बाद मशरूम को तोड़ लीजिए और इसमें पानी देते रहिए, फिर दूसरी बार इसमें मशरूम आ जाता है, फिर तीसरी बार मशरूम आ जाता है। तो इस प्रकार से 3 से 4 तुड़ाई जो है
आप 40 से 45 दिन के अंदर 3 से 4 तुड़ाई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हर कहीं जहां आप चाहें वहां उगा सकते हैं। ये देखिए, ये केवल वो बांस की बनी हुई चटाई है, चटाई को चारों ओर से उसमें नीचे रेत बिछा करके वहां कर रहे हैं। यहाँ देखिए इन्होंने वो टाइल्स बना रखी है, ऊपर टाइल्स लगा रखा है। ये देखिए ये थोड़ा सा ठीक ठाक सा मकान है। तो आप जहाँ चाहें वहां यू स्टार्ट विथ ऑयस्टर मशरूम। ये मशरूम आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। ये देखिए ये अपने घर के अंदर आप देखिए, ये भूसे में बीज मिला करके और इसको पॉलीथीन के इसमें प्लास्टिक के कंटेनर में रख दिया। आप ये देखिए 80% उपज केवल एक बार में आ जाती है। तो घर के अंदर ये हम लोग अभी इनको बेच रहे हैं। घर के अंदर आप इस मशरूम को आसानी से उगा सकते हैं। तो आई विल से ऑयस्टर मशरूम को स्टार्ट विथ ऑयस्टर मशरूम। व्हाट यू नीड इज you need paddy straw, you need mushroom spawn, you need a polythene bag, you need some water and you need bill. बगैर बिल के कुछ होता नहीं है। यदि ये 4 चीजें हो, छोटा सा घर चाहिए, छोटा सा अपना घोंसला चाहिए। छोटे से घोंसले में 10 बाई 10 के एरिया में आप आराम से 8 से 10 किलो मशरूम रोजाना ले सकते हैं। 10 बाई 10 के एरिया में 100 बैग आ जाएंगे। 100 बैग से कम आप एक बार में यदि 100 बैग आपने लगाया तो 100 बैग में आप कम से कम नहीं तो 50 किलो मशरूम हार्वेस्ट कर सकते हैं। Yes, sir. Any other question? Yes, sir. Professor Sandhya Mahane, madam, sir, asking you how to cultivate button mushroom at home. How to cultivate button mushroom at home. बटन मशरूम को घर में किस तरह से उगा सकते हैं? बटन मशरूम को उगाने के लिए मैडम, इफ यू आर इन गोंदिया, first of all you have to create the condition because it is a temperate mushroom. It requires 16 to 18 degrees centigrade temperature. So unless you have this much of temperature, you cannot cultivate button mushroom. So even if you are cultivating this mushroom in home, you have to fit in the air condition. You have to fit in the, आपको भले आप 10 बाई 10 के कमरे में उगाएं, आपको कमरे के अंदर का तापक्रम कम से कम 18 से 20 डिग्री रखना पड़ेगा। और इसके लिए एक और दूसरा प्रोसेस है, कंपोस्ट तैयार करनी पड़ती है। ये जो कंपोस्ट आप देख रहे हैं, कंपोस्ट बनाने में इसमें लगभग 20 से 22 दिन लगते हैं। तो सबसे पहले आपको कंपोस्ट बनाना पड़ेगा। कंपोस्ट पैडी स्टार से, व्हीट स्टार से, दोनों से बनती है और इसकी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। इसकी जो प्रोसेस है थोड़ा लंबी है, बगैर टेक्निकल नॉलेज के आप इसको ग्रो नहीं कर सकते। ऑयस्टर मशरूम को, पैडी स्टार मशरूम को, मिल्की मशरूम को, ये ऐसे मशरूम है जो हिंदुस्तान के लिए बनाए हुए हैं। ये मशरूम जो है ये विदेशों से हमने इसकी तकनीकी को लाया है, इसलिए इसको उगाने के लिए आपको प्रॉपर ज्ञान का होना जरूरी है। तो प्रॉपर ज्ञान और प्रॉपर कंडीशन, टेम्परेट कंडीशन में इसको उगाना पड़ता है। तो टेम्परेट कंडीशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लाना पड़ेगा। कंपोस्ट बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कंपोस्ट जब आपका बन गया तो कंपोस्ट में इस प्रकार से कंपोस्ट को मल्टी टियर सिस्टम में आप बिछा देते हैं, लगभग 4 इंच की या 5 इंच की गहराई में, और इसके ऊपर बीज मिला देते हैं, इसको ढक देते हैं। ढकने के बाद 6-7 दिन में 10 दिन में ये जो बीज आपने मिलाया है वो इसमें पूरा फैल जाता है। फैलने के बाद जो है एक और प्रोसेस होता है जिसको हम केसिंग बोलते हैं। केसिंग जो है 1 इंच की लेयर इसके ऊपर जो है फार्म मैन्योर की डालनी पड़ती है, उसके ऊपर मशरूम आ जाता है और उसके ऊपर इस प्रकार से बटन मशरूम निकलते हैं। ये 3 माह की एक फसल होती है और एक फसल जो है लगभग 45 दिन बाद निकलना शुरू होती है। और घर के अंदर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घर के अंदर करने के लिए आपको टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री तक मेंटेन करना पड़ेगा। यदि आप एक एसी लगा लें तो 10 बाई 10 के कमरे में कम से कम 3 फसल आप आराम से इस मशरूम की ले सकते हैं जब तापक्रम कम होता है। नेक्स्ट, one more question, sir. Anjali Sharma, she said, as a homemaker, how can I do mushroom farming and as a social worker, how can I help poor people? आप अपने ज्ञान के प्रकाश से दूसरे को प्रकाशित कर दें, सबसे बड़ी बात तो यही होगी। मैडम सुन रहे हैं ना? आपके अंदर जो ज्ञान है, इस ज्ञान से दूसरे को प्रकाशित कर दें। जो मैंने आपको बताया उस ज्ञान को प्रचार प्रसार कर दें। और मैंने आपको बताया कि ऑयस्टर मशरूम को उगाने के लिए एवरीथिंग इज अवेलेबल एक्सेप्ट सीड। सो सीड जो है वो आप उसकी 7 दिन की ट्रेनिंग ले लें। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कम से कम 12 कृषि विज्ञान केंद्र हैं
जहां हम मशरूम इस्पान बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। आप नागपुर चले जाइए, नागपुर में आपको, या आप अकोला चले जाइए, पंजाब कृषि विद्यापीठ में अकोला में इसका बीज बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप हमारे यहाँ जाइए, गोंदिया से ट्रेन में बैठिए 4 घंटे में रायपुर, रायपुर में आप आकर के मशरूम इस्पान की ट्रेनिंग ले लीजिए, और मशरूम इस्पान की ट्रेनिंग ले लीजिए, बनाने की ट्रेनिंग ले लीजिए। यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को जो महिलाएं आपके कांटेक्ट में हैं, जिनको सोशल सर्विस आप देना चाहती हैं, आप बाकायदा इस नॉलेज को स्प्रेड करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को कंपनी बनाइए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, वैसा बना करके आप समाज में मार्केट को अपने बस में रखिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लोग बोलते हैं उगाने के बाद बिकता नहीं है, तो बेचने का काम, बीइंग द एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड, बेचने का काम जो है, थोड़ी आपको स्किल है तो आप ये काम को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। यू कैन एस्टेब्लिश मार्केटिंग लिंकेजेस विद द पीपल who are in the metros, and by tapping those linkages, you can very well establish the marketing linkages and help people in the rural areas or maybe in the urban or peri-urban areas. Okay, हाँ सर, एक क्वेश्चन मैं लीलारी मैडम मैं बोल रही हूँ। सर मैं रत्ना बोल रही हूँ। सर एक क्वेश्चन ये वत्सल श्रीवास्तव जी का है। सम इंफॉर्मेशन ऑन ऋषि मशरूम, मेडिसिनल मशरूम ग्रोइंग इन छत्तीसगढ़। सर इसको कैसे घर में उगा सकते हैं, उसके ऊपर जानकारी चाह रहे हैं सर। पहली बात मैं कहूँगा, कौन किसको चाहिए इसका जवाब? वत्सल श्रीवास्तव। वत्सल श्रीवास्तव जी, ये मशरूम मेडिसिनल मशरूम है। ये इसकी उत्पादन की तकनीक मैंने एक स्टूडेंट को पीएचडी कराई है। इसकी उत्पादन की तकनीक मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। आप इसे उगा भी सकते हैं। लगभग 3 माह की भी ये भी एक फसल है, 3 माह की है, और लगभग 50 दिन के बाद आना निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो बाजार है इस मशरूम का, वो बाजार हमारे यहाँ है नहीं। यदि आप घर के उपयोग के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसको डस्ट, जो अपना साडस्ट होता है, गेहूं का भूसा है, गेहूं का भूसा 80% लीजिए, राइस ब्रान जो है या साडस्ट जो है 80% लीजिए, 20% लीजिए, 1% ग्लूकोज लीजिए, 1% कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए, चारों को मिलाइए, इसको स्टरलाइज कीजिए, बीज मिलाइए, और इसे आप जो है ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करना दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि मार्केट जो है हमारे हिंदुस्तान में इस मशरूम की जो मार्केटिंग फैसिलिटी है बहुत अच्छी नहीं है। तो कई लोगों ने जिन्होंने इसको उगाया है, उन्होंने इसको बेच नहीं पाया और वो हताश होकर के फिर उगाना बंद कर देते हैं। दूसरा ये है कि चूंकि ये मशरूम मेडिसिनल नहीं है, एडिबल नहीं है, इसलिए आप इसे खा भी नहीं सकते, ना बाजार में बेच सकते। इसे केवल मेडिसिनल है। मैं चाइना में था, चाइना में इस मशरूम की चिप्स बना करके, और लोग जो है इसे गर्म पानी में डाल के पीते हैं और बोलते हैं कि अमृत है। तो वहां ये बहुत कॉमन है। अब हिंदुस्तान चाइना तो है नहीं। आपकी बात को कितने लोग मानेंगे, कितने लोग चिप्स को पानी में डाल के उबाल के और उसको गैरोटी के नाम से पिएंगे, इसमें मेरे को डाउट लगता है। तो कुल मिलाकर के मशरूम को उगाना तो आसान है, उगा सकते हैं, कहीं कोई दो राह नहीं है, लेकिन मार्केटिंग की इसमें समस्या है। लोग इसको मार्केट ठीक से नहीं कर पाते हैं। बाहर यदि भेजेंगे आप तो चाइना में इसका प्रोडक्शन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद जापान में होता है, इसके बाद जो है आपका कोरिया में होता है, मलेशिया में होता है। मलेशिया इज लीडिंग कंट्री नाउ इन कल्टीवेशन ऑफ दिस, जो रबर का प्लांटेशन है, रबर के प्लांटेशन में गैंडोडर्मा की खेती वो लोग कर रहे हैं मलेशिया में। तो मशरूम को उगाया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी प्रोसेसिंग की और मेडिसिन बनाने की तकनीक अवेलेबल नहीं है। इसलिए इसका हमारे यहाँ, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी कंडीशन में इसको लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जो लोग उगा रहे हैं वो थोड़ा बहुत उगा रहे हैं। कमर्शियल स्केल में इसका कल्टीवेशन हिंदुस्तान में बहुत रेयर हो रहा है। I think you got my point. वत्सल श्रीवास्तव जी, आर यू कन्विंस्ड? वत्सल श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सर, पहुंच रही है। सर किरण जांगड़े आपसे, सर किरण जांगड़े ये आपसे जानना चाह रही हैं कि मशरूम की ट्रेनिंग के बारे में
और वो आपसे मिलना भी चाहती है। साथ ही आपके पास मशरूम प्रोडक्शन को लेकर क्या प्लान है, इसके बारे में वो जानना चाहती है। कुमारी किरण जांगड़े, मिस किरण जांगड़े। जांगड़े मैडम, मशरूम की ट्रेनिंग जो है ये रेगुलरली हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का एक विभाग है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में मशरूम की ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट मशरूम 1983 से संचालित हो रहा है। इसमें डॉक्टर CS शुक्ला, डॉक्टर HK सिंह, ये 2 लोग हैं जो मशरूम की ट्रेनिंग देने में मशरूम की ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 27 कृषि विज्ञान केंद्र है। मैं समझता हूँ हर कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम, एस्टर मशरूम उगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप रायपुर आइए, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और जो ट्रेनिंग का कैलेंडर है उसके लिए मैं आपको अभी नंबर दूंगा डॉक्टर CS शुक्ला का। आप डॉक्टर CS शुक्ला से मिलिए और डॉक्टर CS शुक्ला से मिलकर के एक नंबर नोट कर लीजिए, मिस्टर HK सिंह। ये भी उस विभाग में, ये भी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मशरूम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में है। और मिस्टर HK सिंह जो है ये मशरूम के विशेषज्ञ हैं। इनका नंबर है 831-906 3928। ये मिस्टर HK सिंह है। सर रिपीट करेंगे सर, रिपीट करेंगे सर। 831-906 3928। मिस्टर HK सिंह ये बहुत सारे उस मशरूम के बहुत ही इज ए वेरी यंग डायनामिक साइंटिस्ट इन आवर यूनिवर्सिटी. He is very well known now. He joined this project only 3-4 years back, but he is a wonderful scientist, very devoted scientist, and he is imparting training program now in mushroom. और दूसरे हैं डॉक्टर CS शुक्ला जो इंचार्ज है मशरूम प्रोजेक्ट के, उनका नंबर भी आप नोट कर लीजिए and you can contact him 98939 Dr. CS Shukla, who is the in charge of All India Coordinated Research Project on Mushroom, Department of Plant Pathology, IGKB Raipur, 98939 50649 98939 50649। ये 2 लोग हैं जो मशरूम की ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। और वी आर फॉर्चुनेट दैट आउट ऑफ अबाउट 25 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, one we have in Chhattisgarh for the last since 1983. We have been running this project and our project is very well known. It is doing very marvelous job in the country, and this project is providing imparting training program. And we are also, as I told you, that in skill Vigyan, we are going to submit a project, and under that project I will also be one of the coordinator in that project, Dr. CS Shukla, myself, and Dr. HK Singh. If we get that project, then we would be happy to train you also. So you can contact these people. These are the 2 key persons nowadays, because I am now in administration. Earlier I served mushroom project for about 15 years, but now I am in the administration. But you can contact these people. If you feel any difficulty, just tell me so that I can communicate your message to them, and they will be helpful to you. बोलिए मैडम. Is there any other question? कई बहुत सारे क्वेश्चंस ओके सर, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और कुछ चैट बॉक्स में हैं जो आपसे कांटेक्ट करेंगे. चलिए ठीक है मैडम. Again, thank you so much. Thank you so much to Nahekar साहब, मैडम रत्ना नशीने. हेलो. हेलो. वेलकम सर, वेलकम. ओके सर. आइए सर, गोंदिया से झुकझुक गाड़ी. हाँ बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा. बहेकर साहब बंद करवा दिया आपने उसको. बहेकर साहब बंद करवा दिया आपने छुक. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. ओके. जरूर आइए. आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा.
My heartily thanks to Honorable Dr. M.P. Thakur, who has given a knowledge of mushroom cultivations, especially on marketing of mushroom cultivation, status of malnutrition in and children, nutritional status of Indian citizen, importance of mushroom for pregnant women, adolescent girl, lactating women, nutritional value of mushroom, clinical sequence of malnutrition, and what is the mushroom, edible versus poisonous mushroom, why to grow mushroom, advantage of mushroom, and gucci mushroom vegetables. Entrepreneurial skills in women of mushroom production technologies. Yellow card maintained by Pradhan Group. Job opportunity in mushroom cultivation business. Women entrepreneurship in button mushroom cultivation. Health benefit of mushroom. Production export. Consumption of mushroom in China versus India. Global scenario of mushroom production. National scenario of mushroom production. Paddy uh, paddy straw mushroom cultivation in various states. Then an innovation of ostro mushroom cultivation, milky mushrooms, project costing of mushroom, woman entrepreneurs through value added mushroom based product, how to use royal oyster capsule, and on behalf of invitee, guests, organizers, convener, and all, thank you very much, Dr. Mahesh Prasad Thakur, a valuable and knowledgeable speech. Thank you, sir. Now I request to Funde sir to deliver introduction of the next speaker, Dr. Rekha Tiwari. Thank you, madam. Hello, everyone. I am Dr. Jagendra Punde, Assistant Professor in Physics at SS Girls College, Gondia. Thank you, Thakur sir, for a nice presentation. It's my pleasure to introduce Dr. Rekha Tiwari, madam. Now, presently, she is working as scientist, home science at KVK RVSKVV Ujjain, Madhya Pradesh. At a as a home scientist, she has earned more than 18 years of teaching, research, extension experience in AICRP self-employment scheme at College of Home Science, Marathwada Agriculture University, Parbhani, Maharashtra. Krishi Vigyan Kendra, Kulkheda, Jarora, Ratlam, and KVK Ujjain, respectively. Here about 26 research papers in international and national level, 24 abstract, 40 popular articles, 7 extension publication, and 7 folders and extension manual, as well as 6 book chapters with ISBN number and 3 ICAR publication to her credit. She is closely associated with several professional societies in India. Her work was recognized at national level in extension and TOT through KVK and received the Young Scientist Award and Best Oral and Poster Presentation Award at international and national forum. She is closely associated with Women Empowerment Training Program ATMA and Farmers Training Center at district level. She is having excellent knowledge about formation of women SHES at rural level, and under her guidance SHG were started successfully, and also this SHG got huge success by receiving award at district and national level. She is devotedly working for removing the malnutrition among children and for women at rural area by adopting a Nutri-Smart village. Today, she is going to deliver lecture on how to start small enterprise for self-reliance of
harm women. Welcome, madam. I request you to deliver your lecture. Over to you, madam. Thank you. Thank you, Kunde sir, for a nice introduction. First of all, I would like to thank my dear colleague Ratna Nashininan for her really a very beautiful cooperation regarding the introducing myself in this 2 days webinar. Madam Ratna Nashine, thank you from my side. Next one, the SS Girls College, Gondia, Department of Home Science, as well as IGKV College of Agriculture Research Station, Narayanpura, for organizing these 2 days national workshops and inviting for me as a lecturer. The principal and co-convener of this webinar, today's webinar, Dr. Bahekar sir, co-convener Madam Khandekar, and yesterday's our chief guest, Dr. Bajpayee sir, even the distinguished speakers, Madam Thomas, she is there today also here, and another speakers, no doubt, my friend Ratna Nashini ma'am, and today's our mind-blowing lecture when I listening to Thakur sir. Really, you have vast and wonderful knowledge regarding the mushroom, sir. And by seeing your experience, by seeing your expertizations, really it is challenging for me how to tackle now my lecture here, because you are a very senior and very experienced holder, sir. Thank you for giving chance to listen to you also, sir. And even the organizing committee, who is entirely devotee and hard working, doing from last I think more than one week, Dr. Moon madam, Dr. Lihari madam, Dr. Mr. Karvez sir, Dr. Khatwani madam, Dr. Kunde sir, Dr. and Dr. MJ sir. Thank you, one and all. If by mistake I'm missing anybody's name, kindly forgive me. Now I would like to share my screen, if you permit me. I was hearing from yesterday also and today also regarding the enterprises and entrepreneurship. Even we are much more in giving emphasis on the women entrepreneurship. Even if yesterday, Madam Thomas given an experience regarding the extension, how the extension is important in our life, how to diffuse our ideas. Without extension, it is not possible. And for when we think about the enterprise, definitely it requires the extension process. And when I hear Ratna Madam also, she also told maximum success stories regarding her KVK experience and all these things. I have a little bit idea, I have a little bit experience, no doubt, not as compared to Ratna Madam and Thakur sir. But whatever I have been experienced from my level, I would like to share with all you people regarding women empowerment, what the obstacles comes, how it is not success. The mushroom story is very nice. So people or that lady has also got very beautiful success in her life for cultivating the mushroom and by selling it. And she is at present in a very wonderful position. But for every woman, it is not possible because there are several bindings are there, social bindings, economic bindings, and all these things. That's why the women are not coming forward. If we see the village, the picture of rural women, it is very difficult to take decision. And we are talking about the starting of their women entrepreneurship. For that, we have to create some awareness and all these things. Regarding, first of all, we have to create awareness and how to start the women enterprises. Because when we say the enterprise, that requires some knowledge, some skill, and something else. Okay. The Kiran Mazuda, one of the famous personality, she told regarding the entrepreneurship is about being able to face failure, manage failure, and succeed after failing. See how beautifully she makes the success in entrepreneurship by quoting the failureship. Nowadays we are hearing about the suicide cases.
in adolescence, in young age, in middle age, and in old age also. Some people are depressed by their life, their routine day-to-day life, and if they are not successful in their life, they will choose the simple route of success. This suicide. In that study regarding the failing will be success, definitely in life will be success. What is an entrepreneur? An entrepreneur is a person who organizes and manage a business undertaking, assuming the risk for the sake of profit. Any person, whoever is earning money is an entrepreneur. Who starts an entrepreneur? If we see the detailed definition of the entrepreneurs, some of the intelligent persons put the definition of the entrepreneurs. They are the economists, they are the sociologists, they are the psychologists. What is meant by the entrepreneurs? Here, if we see a person who assumes risk, risk is a very difficult task in our life. Nobody wants to take the risk. But while we start the business, we have first of all face this risk problem. We have to assume that there is a risk in our life if we start business. Either it may be success, either it may be fail. He is a supplier of financial capital. Who is the entrepreneur? He is an innovator. Without innovative ideas, he can't be a success. A decision maker. He have to take a decision each and every moment in this competitive life. An industrial leader. He is a leader. When he go if he start his business, definitely he will come on a large scale where he has many manpowers, and that time he has good quality of leadership for making his business more and her business more and more successful. He is a manager. Just now Thakur sir also told that women are a good manager. Definitely sir, I 101% agree with Thakur sir that women are the good managers, because they manage not only the home but outside the home duties also very well without any complaints, sir. And we are speak about the ladies. There are so many qualities in the ladies. Among them, one is the manager, which she is having by birth, sir. An organizer or a coordinator of economic resources. He is a proprietor of an enterprise and employer of factors of production. Employer, self-employment. We see nowadays. Yesterday also, madam told that due to the COVID-19, the maximum people were jobless due to one and another reasons. They are not having a job. In that condition, nowadays the government has taken a flagship program regarding the FPO to promote the thoughts on corporating organization sector. For that, yes, my voice is clear. Are you getting my voice? Yes, hello? You are audible. There are 20 steps for setting up an enterprise. We thought that enterprise is a very easy case. No, we have to talk about all programs. There are 20 steps how we can start our enterprise. If we go one by one, then only we can get a success in our entrepreneurship. First and most important is deciding to go into the business. First of all, we have to make our mind set up regarding the business, whether I have to go for the service or I have to go for the business. If business, what type of business? There are so many questions arising in the mind when we start up the business. Once we decide, this is the most delicate and crucial decision. Just now, signing wages, employment options for self-employment or entrepreneurship. The second and most important thing is a SWOT analysis. SWOT analysis not only for the enterprise, but day-to-day in our day-to-day life also. This SWOT analysis is a very important. SWOT means the madam also know in the extension activities we do the SWOT analysis for each and everything. The strengths, weakness, opportunities, and threats. Among them, we have to go for the strength. Have to increase the category of strength and opportunities in our entrepreneurship. The weakness and threats also we have to find out what are the weakness in my planning, in my organizing, in my leadership, or in my entrepreneurship. That weakness and threats we have to remove. That only this SWOT analysis will be success, and we will get success in our entrepreneurship. Third step is the project formulation. Once we decided how to start the once we decided to start the business, ओखली में तो सर देना है, तो फिर मुसल से क्या घबराना है.
This is the Kahawat, very famous. Okay. Then project formulation. We talk about the project, how to do it. The project is an activity in which financial resources are expanded to create capital assets that produce benefits over an extended period of time, which logically leads itself to planning, financial, and implementation as a unit. A beautiful definition is given regarding project. Project means what? P stand for produce of good and services, or for resources, it may be man, machinery, and money. The O for organization, J for justification, which comes economic, financial, and social benefits. 3 points covers under the justification. The continuity means planning. Planning each and every moment we have to do planning in this competitive world. How my business will survive and sustainable in future also. If day to day in life we have to do planning. One great thought of one lady, she told in one magazine that morning only when I wake up, I start myself by saying that each and every moment, what I have to do to push up my organization ahead and ahead. That feeling should be there. We establish a business. Time bound. T means time bound implementation on operation. Time management is very difficult. We have to manage this non-human resources and time. Everybody is having 24 times, but one is getting profit in crores, one is getting profit in thousand, one is getting in lakhs, and some are not at all earning in their 24 hours. Though within 24 hours, how we manage our time for getting more and more profit along with the peaceful life. The fourth one is a product selection. Once we start the planning, the business, how to make a business, and then how to product selection, how to what type of product we have to select. That is also one of the difficult nowadays in a competitive world. If we see the TV, if we see the WhatsApp, there are a number of jumbling message comes in, and when we read it, we see that we are not able to take the decision. We ask our friends, we ask our colleague, we ask to our senior person, or we ask to the same person who was running that business, that whether I should go for this business. That time too many questions arises in mind, and we have to stop on one question by giving the answer which type of product I have to launch in my enterprises. 4P is very important in the marketing. What is that? That is a place where we have to launch it, the product, which type of product we have to launch it, what the price will be, that will be affordable for the all type of groups, or it is for only small landholders, or it is for a high class, high standards peoples, and all these things. The fifth one is a market survey. Just now Thakur sir also told that बना लेते हैं लेकिन बेचना मुश्किल है, उगा लेते हैं लेकिन बेचना मुश्किल है. It is easy to manufacture an item but difficult to sell. It is a very difficult to sell. How to sell it? That is one of the skill, and once you overcome that skill, definitely you will be survive in this competitive world. So it is a prudent to survey to the market before embark of production and satisfy the product chosen is an demand change in product design required, determining demand supply gap, being economic with that supply is very important in the COVID-19. Also, we see the demand, there are no vegetables, the demand is there, but vegetables are not there due to the ban, the supply is not there. That is the gap. That demand and gap supply we have to overcome. What is the problem and how we can overcome this? This will happen only after the market survey. Extent of competition, your potential share of the market, how much you are potential to supply that your product in the market, and price and distribution of policy, etc. The 6 steps for setting up an enterprise is a form of ownership. When we start business, that time some ideas come in my mind that I have to go alone, or I have to join a friend, or I have to go for the cooperative society. It may be private or public. What type of business I have to start? Sole with a partner or on a. Second one is location. Location is also important. The enterprise is important. Great picture ahead also.
That time is location is important because in the rainy season, maximum time it's difficult to transport the goods from one place to another due to one and another reason. And that time, this location is very important where we are establishing our place. The place where the unit is located will be higher around. That is also important. We are, which will be helpful for us. It is higher one is okay, or we have to purchase the land, or it should be our own. The size of plot is also important. When we start a business, what type of business we are selecting, depending on that selection, the size is also required. The eighth one is the technology. So back in picture, any one item, various processes are available. Information on all these available technologies should be collected and the last one identified. This will be useful in determining the machinery and equipment to be installed. Depending upon the technology, we can go for the next selection, the machineries and equipment which is required for our starting the business. Ninth point is the machinery and equipment. After the technology, this is the important point. Having chosen technology, the machinery and equipment required for manufacturing the chosen products have to be decided. Suppliers identified and then cost estimated. One may have to plan in advance for machinery and equipment, especially if it has to be procured from outside the town, state, or country. That is have to be important. The 10th point is project report. The economic and feasibility of the product selection has to be established through a project report. A project report that may how to prepare will be helpful. Thakur sir is also showing that card that the one person, how he is selling, how he is maintaining his record, all these things. Based on that, we have to, anybody, not only we, the person who is establishing or who is going to start the enterprise, he must be make a project report daily and chalk out the project, what type of each and everything you have to note down on that project regarding the enterprise. The 11th one is of finance. Money is no problem, money will be there, but how to arrange, how to manage is important. For starting a small scale industry, but enterprise has to be certain steps and follow special procedure to obtain it. A number of financial agencies will give loans on occasional terms. Depends upon their rules and regulations. Many banks are there, even the NABARD bank, which is directly related to the farm families. They are giving and providing the loans for the APOs also. They are providing the loans, and we can avail that loans based on their terms and conditions, and we can start our business. Because for starting the business, we have to go for the bank support. The next point is power connection. If we go for the establishing our internet, if there is no power connection, that is useless. At present in my home, there is no power. That's why I make arrangement on the laptop also and on the mobile also. If I was not able to connect with you people, I will go for the another options. This power connection is important for my presentation. Definitely, it is important for the enterprise also, or the entrepreneur which are going to start, and that should be the continuity must be there for the power connection, because some of the products which require continuous power connection, power supply for producing the product. The installation of machinery, when we select all these things, if we chalk out till 12 points, the 13th point will be installation of machinery. When we choose the exact our enterprise, what type of machinery is required, that where we have to install it, all this we have to make a pre planning. Recruitment of the manpower, this is because only one person can't be able to establish a price. He requires manpower, he requires some human resources. Once machines are installed, manpower will be able to run them. So the quantum and type, both are here, I'm explaining here. The quantum and type, whether skill, semi-skilled labor are required for running my enterprise, that will be very important, and we have to identify whether what type of labors is required.
and how we can the source of getting desired labor, identify and labor staff required. Possibly the labor has to be trained either at the entrepreneur's premises or in a training establishment also. Most of the times we select the laborers also, but they don't know, they are unaware about the handling of the machine. That time we have to provide the trainings, one skill training also to run that machines also. The raw material, all this manpower is there, machines are there, even the power supply is there, and there everything is there, but raw material is not available, then your business will be not possible to success. The labor will be required for the labor will require raw material to work upon the installed machine. The raw materials may be available indigenously. It depends upon your choice. You can go indigenously or you can take the support from the government agencies also. The production, it must be always go on a increasing direction. It should not be go in a decreasing direction or in a zigzag way. It must be always on ascending order, because the production will give the profit to you. It will give the BC ratio to you. The person who is surviving, the person who is giving importance to his life regarding the enterprise, he must be a successful while establishing this enterprises. If the production is decreasing, definitely he will be unsuccess in his life. The until establishment should have an organizational setup, that is the structure of the manpower proposed to be employed must be determined. This ensures smooth and effective running of the unit. There should not be a wastage of manpower. If a manpower we are utilizing, we are paying money for them, each and every minute is important for us also, even for those people also. It should not be waste, because the manpower and time, both human and non-human, both resources are very important while running any business or any enterprises. The next stage is trial production. Before commercial production, we have to go for the trial production, because based on this trial production only we can get that our survey is good or not, whether my choice is good or not, whether my salary is right. That based on this trial production, if they are provide the free in our Ujjain is famous for the Mahankal temple, everybody knows. Okay, in our temple, a family comes from the Maharashtra and they start their business at the existing door of the Mahakal temple. There, they provide the free of cost one herbal. Because of the free of cost, every person whoever used to go to the temple, they come out from their backside and take that cup of tea of the herbal, and after 3 months he has been starting business by selling the product of the herbal tea in a beautiful and attractive packets. This is the fundamental rule of the any enterprise trial production. First of all, you have to provide some free of cost. Then you make them, you have to use that product, and automatically consumer will be attracted towards your products. Marketing. Each and everything you have been launched in your enterprises, everything has been planned, everything is okay, but marketing is difficult. Thakur sir also told, "Hum kar to lete hain, lekin bechna mushkil hai." I like that line, because that is the obstacle the KK people always face. And being a lady, I face more problem, because I have to tackle with the rural ladies. They are very shy nature. They have no power of taking the decision, and in that we are talking about the marketing is very tough nowadays. The WhatsApp are there, Twitters are there, so many in it networking is there, and in that the rural lady how can survive. But if we provide them to this suggestion, you go and start your business, it is a very difficult marketing. Having manufactured the product, the stage comes to sell it. This is called marketing. Various aspects like how to reach the customer, distribute. The marketing means what? Reach to unreach. The person who are not come to you, we have to go there. That is a very simple way. We can sell our product anyhow. Test marketing and commercial marketing. After test marketing, the commercial marketing will be success. If the test marketing is good, definitely the commercial marketing will be success. The last 20th point for setup
for setting up an enterprise is quality. The bullseye is given here. We have to focus on the quality. जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन जी से पूछा क्या दिखाई दे, उन्होंने कहा, उन्होंने सभी से पूछा था, भीम से भी पूछा था, युधिष्ठिर से भी पूछा था, नकुल और सहदेव से भी पूछा था कि जब बाण चलाओगे तो बताना कि तुम्हें क्या दिखाया। किसी ने कहा मुझे आसमान भी दिख रहा है, किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, पंछी भी दिख रहे हैं, बट Arjun is the only one person who told that his target is only that where I have to throw my बाण। मुझे तो सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है जहां मुझे आपने कहा है बाण चलाना। That is a quality. Means we have to avoid all the unnecessary things and we have to focus on our enterprise and success and profit of our enterprise. For the quality assurance and quality control, these two things are very important. We have to focus on a quality, and we can check our quality ourselves daily only. We can give 4 ranking: poor, average, good, and excellent. In that, where today my position is going on. If we always go for the excellent, definitely you will be successful businesswoman or a successful businessman. जब हम छोटे थे, मैं एक एग्जांपल यहाँ क्वालिटी का कोट करना चाहूंगी, मे बी ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी। जब हम छोटे थे, सबसे पहले जो, अब तो बिस्किट काफी आ चुके हैं, नंबर ऑफ ब्रांड्स आर देयर, नंबर ऑफ वैरायटीज आर देयर। जब हम छोटे थे तो एक पार्ले जी का बिस्किट आता था। in my childhood, in my adolescent age, in my young age, even at the time of middle age, if I consume the parle biscuit, the shape, the size, taste, all the texture, each and everything is just like when I eat in my old age. Might be you people also taste it. There is no change, not at all. They are maintaining the quality, only little bit price is raising nowadays because of everybody is their price, definitely the quality will be also raising. That is the quality. Quality means what are you in the last day also. In this initially, if we go qualitative product, and in last days, if we go worst quality, definitely your business will not be successful. Assurance and quality, and it will be led by the various certification. You have to go for the certification. Certification is also important while running any business. Without that, we can't sell the products. Nowadays, everybody is giving emphasis on the certification. For the AP also, they have to register there. For the SGs also, some certification for the edible items. Definitely, we have to go for the full certification from the food expert. Depending upon the product, if we go for the electric item, it requires the ISMR. If we go for the edible items, EGMAR is required. If we go for the very costly eatable items, definitely for a higher standard, that is a hacker. All these standards requires. I would like to give one brain exercise. Till now we learn about all these things that the enterprise 20 steps also I have been covered almost. The brain exercise for you also and for me also, even Rekha, share this screen. Yeah. yes, I'm again sharing, ma'am. Okay. Brain exercise. My I know the time is very little because by hearing the Thakur sir's lecture. Rekha, your voice is echoing. Okay, you stop that one. Okay, ma'am. Okay. You take that one, yes. Okay, ma'am. Okay, now it's okay? Hello? Yes, it's okay now. Okay, continue, madam. Okay, my heartily thanks Rekha Tiwari, who has given knowledge and guidance how to start small self-reliance home boom awareness and
how to face failure, detailed definition of entrepreneurs is for setting entrepreneur discussion about decide into business, SWOT analysis, formulate use of management, product. Dr. Rekha Tiwari madam has given a detailed knowledge about awareness is the must for entrepreneurship and how to able to face failure, definition of entrepreneurs, self-employment program, steps for setting up an entrepreneurs, discussion about deciding to go into business, SWOT analysis, project formulation, use of resources, management resources, how to product selections, marketing survey, policy, form of ownership, location, technology, machinery and equipments, project reports, power connections, installation of machinery, recruitment of manpower, raw material, production, trial production, commercial production, marketing, production marketing stages, and quality. Thank you so much for informative information, Dr. Rekha Tiwari, madam. Thank you to all. Now I request to co-convener Professor Neeta Khandekar madam to say vote of thanks. Thank you, Lilare madam. Respected sir, madam, and dear participants, I am privileged to propose vote of thanks and concluding remarks of this national workshop. First of all, I would like to thank Honorable Dr. Ramakant Bajpai sir, chief guest of this workshop. He incredibly shared knowledge with us. My deep sense of gratitude goes to respected Ratna Nashine madam for her nice presentation and wonderful job doing for the empowerment of women in the field of agriculture and extension. You are really a jam of knowledge. You are Dr. Honorable Dr. MP Thakur sir says Chhattisgarh ki Jhansi ki Rani. It is only you that this workshop ended in a grand way. I express my gratitude towards my teacher, my guide, respected Gigi Thomas ma'am. She is the only inspiration that I am able to organize this workshop and get connected with all these dignified resource persons. Thank you very much, ma'am, from the bottom of my heart. I am also very thankful to Honorable Dr. MP Thakur sir for sharing vast experience and their knowledge, which would definitely benefit in upcoming future. In my deep sense of gratitude goes to respected Dr. Rekha Tiwari madam for her wonderful presentation. She has very well presented an elaborate topic before us. I am very much thankful to our Honorable Principal, Dr. N.K. Bahekar sir, for his wholehearted support and providing a platform to conduct this national workshop. Really, sir, without
without your support, such a grand activity would never have been possible. Sir, every time you always stand in support of us and always guide us. I am also very much thankful to Honorable Dr. M.P. Kapoor sir for sharing vast experience and their knowledge, which would definitely benefit in upcoming future. In my deep sense of gratitude goes to respected Dr. Rekha Tiwari ma'am for her wonderful presentation. She has very well presented and elaborated topic before us. I am very much thankful to our Honorable Principal, Dr. N.K. Bahekar sir, for his wholehearted support and providing a platform to conduct this national workshop. Really, sir, without your support, such a grand activity would never have been possible. Sir, every time you always stand in support of us and always guide us for such kind of regular activity. I am also thankful to the entire organizing committee who have always supported for making this workshop in successful event. I am also thankful to all respected participants for listening patiently and enjoy the sessions of the speakers from last 2 days. Last but not the least, I pay thanks to all the technicians, teaching staff and non-teaching staff who have directly and indirectly supported and contributed for making this event grand success. Few lines, a few words I want to say with you, share with you. एक सक्सेसफुल IAS ऑफिसर जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके अपने आप को साबित किया, उसके द्वारा उसकी जो लाइनें हैं मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उन सभी महिलाओं के लिए, उन सभी स्त्रियों के लिए जो कुछ बनना चाहती हैं, अपने मुकाम को हासिल करना चाहती हैं। जो नहीं मिला है उसका गम जो करती, जो नहीं मिला है उसका गम जो करती, हासिल मौकों में फिर यूं ही नहीं संभलती। किस्मत से लड़कर पाना भी तो जिद है, ये बातें मुझ में फिर यूं ही नहीं उभरती। मुझको भी गम होता था न मिलने का, मुझको भी गम होता था न मिलने का, लेकिन खुद से ही वादा था चलने का, लेकिन खुद से ही वादा था चलने का। कदमों ने जितना नापा उतना कम है, कदमों ने जितना नापा उतना कम है। यही रहस्य है मंजिल से मिलने का, यही रहस्य है मंजिल से मिलने का। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर ग्रेट कोऑपरेशन and I would make this workshop a success. Thank you, madam, from College of Agriculture and Research Station Narayanpur for cooperating and having a collaboration. I am also thankful to the Bahekar sir for his kind cooperation and support throughout the webinar, and all the faculty members of SS Girls College and also the speakers. Thank you very much, sir. Thank you, madam. Thank you. Okay. Yeah. मैम यहीं पे मैं मेरी तरफ से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
कृषि विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन, इनका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ हमारे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन के डॉक्टर नशीने मैडम, इनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके कोलैबोरेशन से, उनके मार्गदर्शन से ये इतना बड़ा कार्य संपन्न हो सका है। मैं आप सभी की बहुत बड़ी आभारी हूँ। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। Thank you, Ratna madam. Thank you, madam. Thank you, Thomas madam. Thank you, Baikar sir. Welcome, Who madam. has given a nice cooperation. Welcome, madam. Namaste Such all of you. webinar, 2 days national webinar, sir. बहुत सारे स्टेट से ज्वाइन किया इसमें, यूपी से है, पंजाब से है। थैंक यू रत्ना मैडम। आपका पूरा सहयोग हमको मिला है, पूरा 2 दिन से नहीं बल्कि पिछले 1.5 महीने से हम लोग इस काम में हैं। अब इस मीटिंग को यहीं समाप्त कर देते हैं। Dr. Ratna madam. Yes madam. अपनी तरफ से लीव कर दे सर। हाँ सर, मैडम क्लोज कर दीजिए। त्यांच्या याच्यात समथिंग राहून गेलं त्यांच्या रजिस्ट्रेशन। थँक्यू म्हटलं ना तू सगळ्यांना तर म्हटलं की सुरुवातीला रत्ना नशिने मॅडम आले। This session only we have the maximum queries from the participants. So because in the other sessions they didn't have hardly any queries, so I think this is related to our directly the food that we eat. So they are okay, enthusiastic, curious to know what they are eating, whether it is right or not. How to know whether the things are safe or not, what they bring at home and what they are eating. So I think so this they are taking this